Is it live, sir? So, good evening, everyone. Today is the third day for economy revised through 500 questions. In the first 2 days, we have covered basics of macroeconomics, national income, inflation. Yesterday, we dealt with monetary policy and banking. Today, we'll be covering fiscal policy, taxation, external sector, and capital market. So, today we have more number of questions than what we had yesterday, what we had till last time. Okay. Online students are saying no video or audio. Please एक बार online बच्चे confirm कर देंगे क्या? More students can confirm. Now it's fine. Okay, great. All of you, all the online students, एक बार confirm कर दीजिएगा. Okay, great. So, I was saying कि in the previous two lectures we have covered these topics which we have kept in green, and today we have to cover these topics. And then for tomorrow we will have the last session on economy RTFQ. इसके बाद आपका ancient medieval culture would start. That is from today is 22nd, right? 23rd को आपका economy का last RTFQ हो जाएगा. उसके बाद ancient medieval culture will be starting from 25th. So tomorrow we'll be covering industry, agriculture, infrastructure, employment, poverty, इनसे related जो basic चीजें हैं, we'll be dealing with that. Okay, so without wasting any more time, let's come to till yesterday we had covered 211 questions. Today we'll start with question number 212. We are starting with fiscal policy, government budgeting and taxation. First we'll do PYQs, then we'll practice some more questions, and with this we'll go ahead. Okay, so question number 212 बताइए. Yes. What is the answer? C. Are we all saying C? Okay. C is the answer. देखो, a share of household financial saving. जैसे when I save money, I deposit it in bank, and bank borrows, or bank buys government's security, or sometimes I myself directly can buy government security. So some money may be going for government security, that is true, and a big part of dated securities issued to market related rates in auction form a large component of internal debt. In fact, government का जितना debt है, majority of it in the form of long term dated security, and that is why 2 is also correct. So both 1 and 2 are the answer here. C would be the answer. Let's go to question number 21. Question number 213. Along with budget, we have some other documents, macroeconomic framework statement and so on. The provision for it is provided where? It is in the FRBM Act. A simple factual question. We don't have to worry much about it. So 213 answer would be D. Let's go to 214. In the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Non-financial. Do we understand the meaning of non-financial? Do we understand the meaning of financial debt? Financial debt is a debt which is taken when banks borrow money. They don't borrow it for creating road or anything. They borrow it so that they can further give that money for loans. That is financial. बाकी सारे debt क्या है? Non-financial debt. So when you are borrowing money for further loaning it for financial purpose, that debt is financial debt. Everything else is non-financial debt. So what should be the answer here?
Non-financial debt includes which of the following? Housing loan owned by household, amount outstanding on credit card, treasury bill. इसमें बताओ कोई भी is there any money which has been taken for further loaning money? So none of them is financial. All three of them are non-financial. Do we get it? Do you understand what I'm trying to say? So here answer would be D. I hope we understand the meaning of non-financial debt. Let's go to question number 215. 215. 215. इकोनॉमिक रिसेशन है तो क्या करेंगे हम? Recession means less economic activity. We'll try to increase economic activity. How do we increase economic activity? By cutting rates and by increasing government expenditure. So cut in tax rate, B, increase in expenditure on public project. First part में cut in tax rate is fine, but increase in interest rate is something that will hinder revival, right? So B is fine. यहाँ पे C में भी again increase in tax rate is wrong. Reduction of expenditure on public. We increase expenditure on public project when we have to revive the economy. Okay. So here answer would be 215 का answer would be B. Let's go to 216. Let's go to 216. Yes, देखो when it comes to public debt, तब most of the debt is by government, but when it comes to overall debt, तो government का external debt is very less. Only around 5% of government debt is debt from outside the country. Most of the government debt is internal debt. तो बाहर से ज्यादा पैसा किसने ले रखा है? बाहर से ज्यादा पैसा ले रखा है businesses ने in the form of external commercial borrowing. And therefore one is wrong. Most of India's external debt is owned by government entities. No, most of India's external debt is owned by private sector. It's in the form of external commercial borrowing. And all of India's external debt is denominated in US dollar. Why would that happen? Our external debt, we may have taken some debt in yen from Japan and so on. So it need not be denominated in dollars. So both are wrong. Answer would be D. 216 ka answer would be D. 217. Now 217, no. Though it's a PYQ, I have modified it a bit. Modified it as per the current scenario. That is, जो 217 में question था, those tax rates and those things have changed. So that would not have been valid. So I have modified this question a bit so that we come to understand the current context. If the question is asked today, what should be the answer? वैसा वाला. Okay, let's do this. Consider the following items. Which of the above items are exempted under GST? Yes, jaggery and salt. These are two things which are exempted, whereas on edible vegetable oil, packed coconut water, we get we have to pay around 5% of the. Okay, so A is correct. एडिबल वेजिटेबल ऑयल, जैसे आप वेजिटेबल ऑयल मार्केट से कभी खरीदोगे तो देखोगे वहां पे एक जीएसटी का कंपोनेंट है. ऐसे पैक्ड कोकोनट वाटर हैज सम जीएसटी कंपोनेंट ऑन इट. अराउंड 5% ऑफ जीएसटी इज इंक्लूडेड हियर. तो आंसर वुड बी ए. 218. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 218. Equalization tax of 6% or equalization levy of 6%. The government of India decided to impose equalization levy on online transaction. जैसे क्या होता है ना, let's say someone from India is buying some online service from someone in US. तो वो US वाला profit earn कर रहा है, he is not giving anything to India, right? So to reduce this kind of thing, to reduce, like even in this transaction, because the good service is eventually being taken by someone from India, some tax should be levied by India. That was equalization tax, which India imposed as 6% of the transaction would be taken as equalization tax.
So first one, it is introduced as a part of Income Tax Act. No, it was not introduced as part of Income Tax Act. Finance bill में ही अलग से provision था इसके लिए. It was not like Income Tax Act was amended and there this was introduced. So one is wrong. Non-resident entities that offer advertisement service in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement. तो जैसे Google is providing advertisement services in India, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि non-resident entities that offer advertisement services in India, they can claim credit for this tax. So if they pay 6% tax here, then in their home they'll be able to say, I have already paid 6% tax, so there I'll not be paying that 6%, or I'll get a credit, or I'll get a discount of 6%. No, nothing like. For this to happen, the other country will also have to agree. No, for this kind of thing we have to have a international agreement. Government of India cannot do this कि भाई हम 6% यहाँ लगाएंगे and in US you pay 6% lesser. That cannot be done, right? उसके लिए we have to have a double taxation avoidance agreement with US on this particular issue. So this is also wrong. Both the statements are wrong. Answer here is D. 218 में answer is D. 219. 219. 219. अब ये ना एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ दैट टाइम. एक कमेटी बनी थी कॉल्ड एनके सिंह कमेटी टू रिवाइज FRBM Act. That NK Singh committee had given its recommendations, and the question is about that Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee report. NK Singh committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for general government by 2023, comprising of 40% of central government and 20% for the state government. So debt to GDP ratio he had recommended. अभी debt to GDP ratio 70% है, it should come down to 60%. और उसमें this one, center should have 40% and state should have 20%. So basically center का share 50% था उस time. So it said कि it has to, center का debt has to reduce to 40% of the GDP, state का debt has to reduce to 20% of the GDP. है ना? अभी this question is not very relevant. I should have removed it because it's based on the committee report of that time. But still, what did it recommend? 40% plus 20%, 60%. The central government has domestic liability of 21% of GDP as compared to that of state. State having 49% of GDP. गलत दिख रहा है? State का target is 20%. State at that time was having 21 or 22% of debt as GDP. Debt as a percentage of GDP. तो यहाँ पे इन्होंने state को 50% debt दे दिया है as a percent of GDP. That's not true. Center has way higher debt than states. First thing. Center का debt at that time was around 50% of the. Okay, that's why 2 is wrong. As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the later. ये तो सही है. I think it came in test also. इस week जो आपका समीक्षा टेस्ट हुआ था उसमें भी the statement was given there. If state is borrowing any money and if it owes some money to central government, it has to first take permission from central government. It is given in the constitution only, constitutional provision है. So 1 and 3 are correct. What will be the answer? C will be the answer. 219 में C will be the answer. Let's go to 220. Question number 220. Let me see students online attempting it. I want answers from online student on this particular question. They're saying A. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. उस time GST force में नहीं आया था when this question had come. 2017 में June में exam was happening and July 1st of July 2017 से GST force में आया. That's why the question was it will. Right. So 1 is correct. I hope everyone is comfortable here. Right. So should I go ahead? Okay. 220 A is the answer. 221.
221. Tushar is asking single market का मतलब single market देखो earlier when GST was not there every state had different sales tax rate. So a packet of Parle G did cost something else in Delhi, something else in Rajasthan, something else in other state because state applied different taxes. So we could not treat this entire market as a single market, but now because the same tax would be applicable, it could be treated as a single market. Let's come to 221. 221. Tax revenue as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. No, it has not happened. देखो, tax revenue as a percentage of GDP sometimes have even declined. Tax revenue has kept on increasing. Every year tax revenue has gone up except the 2020-21 COVID year. उस टाइम तो कोविड नहीं आया था, इट वाज अ 2017 क्वेश्चन. तो टैक्स रेवेन्यू हैज गॉन अप बट नॉट टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. इसी साल जीडीपी 7-8% से बढ़ा है एंड टैक्स may not have increased by that much percentage. Got it? So one is wrong. Fiscal deficit as a percentage of GDP of India has steadily increased. Now fiscal deficit also, sometimes we try to control fiscal deficit. So just before COVID we had gone to below 4% wala situation, but then after COVID we see it rising again, है ना. तो fiscal deficit as a percentage of GDP has steadily increased. ये तो definitely wrong है. Fiscal deficit as a percentage of GDP we try to bring it down. It was coming down, but again with COVID it went up, but after that we have again been bringing it down. आपको बजट कराया है मैंने क्लास में, है ना. And in fact the first class of current affairs was on budget. The latest data, what is the fiscal deficit target for this year, those some basic concepts I hope you have revised before coming to this class. Okay, so both are wrong. Answer should be D. D for dog. 221 में answer should be D. Let's go to 222. 222. देखो, this RTFQ will benefit you only if you are ensuring that you are understanding each and every concept. You are noting each and every pattern. बस सबका आंसर देख देख के चले जाओगे तो there is no purpose. These 3000 questions, if each of these 3000 questions you are actually able to understand the concept, you are actually able to determine the pattern. यार tax as a percentage of GDP sometimes even go down. Even without COVID also it may have gone down. वो pattern ध्यान रखना है. Fiscal deficit, you'll see fiscal deficit when government starts taking measures, it starts going down. Sometimes it goes up. Because of some X or some different reasons, fiscal deficit may go up. जैसे जो हमारा target था for financial year 2019-20 वाला जो target था, we did not meet it, and it was not because of COVID. We were not able to meet it because हमने corporate tax में changes करे थे. We reduced corporate tax rates, so government revenue reduced. If government revenue reduced, fiscal deficit would go up. So we were not able to meet our target then. हमने escape clause use किया था वहाँ पे. Right? I have taught these things in class. But in 2020-21, COVID, it reduced government revenue drastically. Government needed to spend more money. Fiscal deficit increased. After that, it has been coming down. Government has been taking measures to bring fiscal deficit down. तो ये कुछ जनरल सिनेरियो क्या है इंडियन इकोनॉमी में, ये सब ध्यान से नोटिस करो. बिकॉज व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चंस, वी आर डूइंग ऑल द PYQs, रियलाइजिंग नॉट अ लॉट ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हियर आर बेस्ड ऑन द जनरल पैटर्न, बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 223. अच्छा, वन मोर सजेशन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर माई स्टूडेंट्स, ट्राई टू रजिस्टर फॉर प्री समीक्षा इन स्लॉट 1. संडे को शाम को ना आई विल टेक अ करंट अफेयर्स. अप्रैल मई में जो छोटी मोटी चीज़ें मिस हो गई होंगी अभी तक मुझसे, उसकी मैं करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा. तो समीक्षा में डोंट रजिस्टर फॉर स्लॉट 2. आपके स्लॉट 2 के टाइम मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ शाम को 5. तो रजिस्टर फॉर स्लॉट 1 9:30 to 11:30 एंड देन 2:30 to 4:30, हाफ एन आवर ब्रेक. और उसके बाद 5 PM से आई मे टेक अ अपडेट साइंस एंड करंट अफेयर्स का अपडेट क्लास, विच सम ऑफ द बेसिक छोटे मोटे फैक्ट्स अगर मैंने मिस कर दिए होंगे. So while teaching, while doing PYQs, we are focusing on basic concepts, but it's my responsibility to ensure that each and every fact which any other student is studying, you should be knowing that also. है ना?
So we'll be taking a class on Sunday. Okay, come back here. 223. 223. डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली क्वेश्चन इज, I missed a question. Which question did I miss? 222. Let's do 222. Which of the following is are included in the capital budget of the government of कैपिटल में? डी ऑल? सब लोग सब each one of you is able to do it without any problem? D. See, I didn't miss it. You all knew it. 222 का आंसर is D. Let's come to 223 now. 223. ए है ना, 1 and 3. न्यू वेलफेयर स्कीम तो और खर्चा बढ़ा देगा. एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज देयर आल्सो गवर्नमेंट में नीड टू स्पेंड मनी तो रिड्यूस डेफिसिट. 1 and 3. 1 and 3 शुड बी आंसर. 223 का ए शुड बी द आंसर. 223 का ए शुड बी आंसर. 224. 224. टैक्स टू जीडीपी. देखो एक बेसिक चीज है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, फिस्कल डेफिसिट कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अबाउट दैट ओनली. एंड आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स योर सिलेक्शन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी डिटरमाइंड बाय फैक्चुअल और उस तरह के क्वेश्चंस. इट विल बी डिटरमाइंड बाय जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन है आप उसमें कितने हैं. समटाइम्स स्टूडेंट्स कम कि सर यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया. मैंने कहा कट ऑफ वाज ओनली 75. It was not difficult question which made your selection or which hampered your selection. Those it was easy questions. If basic concepts नहीं पता तब आपका selection रुक रहा है, ना कि because you did not know some flamboyant history fact from some random book. Basic NCERTs में जो चीजें लिखी हैं वो नहीं करके आओगे तो selection रुकेगा. Basic concepts नहीं समझ के जाओगे तो selection रुकेगा. इसीलिए ना इस तरह की चीजें नहीं करनी होती हैं कि कोई भी एक नई किताब उठा के पढ़ने लग गए बिकॉज वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दैट बुक. अभी रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर कि सर मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं बट आई नो द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑल द हिस्ट्री क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इफ यू हायर मी आई विल टेल यू दैट एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट. नहीं, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, है ना. हमारे पास निखिल सर हैं, एक आप में से जिसने भी निखिल सर के नोट्स वगैरह पढ़े होंगे, पर तो जो फालतू वाले काम करने हम करेंगे ना. व्हाई वुड आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू रीड एनी रैंडम बुक? व्हाट एम आई हियर फॉर? व्हाट आर टीचर्स डूइंग इफ यू हैव टू रीड एनीथिंग न्यू वन? आपको जब स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसमें होनी चाहिए ना चीजें. मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मेनी क्लासेस मैं बोल रहा हूं संडे को मैं एक और क्लास ले लूंगा, जो भी फैक्ट्स मिस कर रहे होंगे वो पढ़ लेंगे. राइट, इट शुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ कम बैक. डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो. देखो अभी टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे सवाल आया था एक पहले भी, वेयर वी सेड कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हैज कंसिस्टेंटली गॉन अप. दिस वाज द क्वेश्चन एंड वी सेड दैट वाज रॉन्ग. नाउ another question on tax to GDP ratio. A decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? बताइए.
आप लोग बस यूपीएससी का आंसर की देख के आ गए ना? नहीं, यूपीएससी हैज गिवन आंसर टू बी ए, बट एज पर मी आंसर शुड बी डी। यूपीएससी ने अपने आंसर की में ए दिया, अब उनको कैसे क्वेश्चन करें, बट देयर इज नो रीजन। देखो, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो में डिक्रीज हुआ है। व्हाट डज इट शो? इट शोज स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, नॉट नेसेसरली, है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा हो सकता है, बट टैक्स का ब्यूएंसी नहीं है इतना, तब भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैन बी लोअर, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी। और सेकंड, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता अगर नेशनल इनकम का, तो सम पीपल वुड हैव गॉट मोर मनी, एंड हायर इनकम पे टैक्स रेट इंडिया में ज्यादा है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो वुड नॉट हैव गॉन डाउन, राइट? ये भी क्लैरिटी फॉर श्योर नहीं है, राइट? आर वी गेटिंग इट? तो एज पर मी, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, आंसर होना चाहिए था डी, बट यूपीएससी ने अपने आंसर की में आंसर ए दिया था, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूं। आपको अगर किसी रीजन से ए सही लग रहा है तो गो फॉर ए, बट एज पर मी आंसर शुड बी डी, बोथ आर रॉन्ग। गॉट इट? आर वी गेटिंग इट? आपको कोई रीजन दिख रहा है? हाँ बताइए। इसमें अच्छा, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स मोर इक्विटेबल। नहीं, नॉट नेसेसरली, वो भी नेसेसरी नहीं है ना, it will not, even the other thing can also happen, right? And that is why none of them are very clear. ऋत्विक मुझे सपोर्ट कर रहा है, ऋत्विक बोल रहा है इट शुड हैव बीन डी ओनली सर। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं? यूपीएससी आंसर की में आंसर वाज ए, बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड, जितना मुझे समझ में आ रहा है, आंसर शुड हैव बीन ओके। तो 224 का आंसर शुड हैव बीन डी। 225, सॉरी, कम अगेन। मोर प्रोटेक्शन वुड हैव, मोर प्रोडक्शन नहीं, नॉट नेसेसरी। देखो, तभी तो टैक्स ब्यूएंसी और टैक्स इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ना। टैक्स इतना नहीं बढ़ रहा जितना जीडीपी बढ़ रहा है, रेशियो की बात है। ओके, ऐसे समझो, ऐसे समझो, चलो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं बढ़ेगा उतना। गॉट इट? कम टू 225, with the reference to Indian budget, which of the following is are covered under non-planned expenditure? देखो, अब तो we do not have plan and non-planned expenditure का classification, but in the past we had expenditure का classification as planned and non-planned. Planned expenditure वो होते थे जो ना गवर्नमेंट नए स्कीम्स प्रोग्राम 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च करता था, उसके उस पे जो पैसे जा रहे हैं, बट नॉर्मल सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट, डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, दोज वर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। उसके बारे में भी प्लानिंग होती थी, मतलब बजट में दे विल प्लान कि दिस मच मनी वुड बी नीडेड फॉर सैलरी एंड ऑल, बट इट वाज नॉट पार्ट ऑफ योर 5 ईयर प्लान। ओके, तो विच ऑफ देम आर पार्ट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? सारे नॉन प्लान होंगे ना। सैलरीज एंड पेंशन ये कहीं नए प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी है पैसा। सब्सिडीज, सब्सिडीज इज डिफेंस। देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मोस्ट ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज फॉर पीपल। आर वी गेटिंग इट? इवन देयर इट इज, जैसे ये क्वेश्चन आता है ना कि डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? अनलेस स्पेसिफाइड विल पुट इट एट रेवेन्यू ओनली। अनलेस ये बोला गया कि दिस हैज बीन, दिस डिफेंस एक्सपेंडिचर इज फॉर क्रिएटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलेस दैट हैपेंस, दैट एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू। डिफेंस एक्सपेंडिचर में आप लाखों लोगों को सैलरी दे रहे हो ना, दैट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। गॉट इट? तो 1, 2, 3, 4, all of them should be non-planned expenditure. But anyways, now we'll not get these kind of question. Planning, non-planning wala classification has been done away with. Answer is C. 225 का answer is C. अच्छा, why am I 226?
226. Okay, some students are asking me to re-explain 224, the statement 2. Let me 226 करते हैं, but let's go to 224 and statement 2. This one, less equitable distribution. देखो, tax to GDP ratio, tax divided by GDP. This is tax to GDP ratio. अब ये बोल रहे हैं a decrease in tax to GDP ratio. Now, decrease कैसे होगा? Either tax reduces and GDP remains same. This is one way in which tax to GDP ratio would have decreased, or tax increases less, GDP increases more. तब भी इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, और टैक्स भी रिड्यूस हो रहा है, जीडीपी भी रिड्यूस हो रहा है, बट जीडीपी का रिडक्शन, टैक्स टू डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इट हैज रिड्यूस्ड, तो इट रिड्यूसेस लेसर. कम रिड्यूस होगा, कम रिड्यूस होना मतलब इसका रिडक्शन उतना नहीं हुआ है, राइट? डिनोमिनेटर शुड बी हायर, नो? If you want tax to GDP, this thing to reduce, denominator should be larger, right? These are the scenarios. Can there be any other scenario? Tax decrease. हाँ, वो वाला scenario. There is no other scenario. Okay. Now the less equitable distribution of national income. How is any of these scenario confirming less equitable distribution of national income? Even at more equitable distribution of national income, we may have this scenario. कैसे? Let's say all of us are here right now. I am earning 1 crore rupees and you are earning 100 rupees. You are not paying any tax. I am paying 30% tax. Government को कितना tax गया? 30 lakh rupees. Next year, let's say distribution is equitable. All of us are earning 20 or 1 lakh rupees. When we are earning 1 lakh rupees, none of us will pay any tax. None of us will pay. The equitable distribution of tax हो गया, equitable distribution of income हो गया, but tax has reduced. Tax में reduce, है ना? तो clarity नहीं है. That is why we cannot be sure about second statement also. Are we getting it? I hope the students who were confused about it, the online students who were confused about it, would not be confused. Okay. So, $226, the sales tax you pay while purchasing toothpaste. देखो, before GST was in force, there used to be a sales tax. GST has removed sales tax, and कौन लगाता था? Sales tax was imposed by state government. It was called VAT. वो सेल्स टैक्स इम्पोज भी स्टेट गवर्नमेंट करता था, कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करता था. दैट वाज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई इन डिफरेंट स्टेट्स द सेम प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंटली. एक टूथपेस्ट 100 ग्राम ऑफ कोलगेट इन दिल्ली वुड बी costing different than 100 gram of Colgate in Rajasthan, because the state tax VAT was different. So the question was, the sales tax you pay while purchasing a toothpaste is tax imposed and collected by state government. अब नहीं आएगा ये, because अब नहीं, अभी भी है in some items, not on toothpaste. They may ask you the sales tax that you pay when you buy a bottle of alcohol, है ना? सेल्स टैक्स वहां पे जो लगता है वो अभी भी इस पे है, बिकॉज जीएसटी हैज नॉट रिप्लेस्ड और जीएसटी हैज नॉट बीन इम्पोज्ड ऑन एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट. पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी देखो, पेट्रोल के प्राइसेस अलग अलग स्टेट्स में अलग हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स आर इम्पोजिंग डिफरेंट सेल्स टैक्स. आर वी क्लियर अबाउट इट? ओके, तो व्हाट शुड बी द आंसर? डी शुड बी द आंसर हियर. 227 in India, deficit financing.
आज YouTube पे कुछ एरर चल रहा है. In comments there are so many students. One watching now दिखा रखा है. ऐसा क्यों होगा? One watching. मेरे लाइफ में ऐसे एक नहीं देख रहे होते. 50-100 बच्चे देख रहे होंगे. Anyways, 227 पे आ जाइए. In India, deficit financing is used for raising resources for. अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? गवर्नमेंट का डेफिसिट है, उसे फाइनेंस कर रहा है, वो आरबीआई से पैसे लेके या दूसरे तरीके से. ए ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए विल डू. व्हाई वुड रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, डेट से दूसरा डेट. हाँ नहीं, दिस इज नॉट व्हाट वी डू, है ना. व्हाई डू गवर्नमेंट बोरो मनी? गवर्नमेंट बोरोज मनी because government wants to ensure that हमारा infrastructure development etc should continue even if when we are in deficit, because in long run if we do not have infrastructure then revival of economy and coming to surplus would not be feasible, would not be possible, and that is why we borrow money. So economic development 227 answer should be A. 227 का answer should be A. Sorry, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना. बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट गेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अबाउट आप बाहर की कंट्री से कैसे इंटरेक्ट करो. डेफिसिट फाइनेंसिंग, यू हैव टेकन सम लोन फ्रॉम आरबीआई और यू हैव टेकन सम लोन फ्रॉम अदर मैकेनिज्म. अब यहाँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट, विल नॉट गेट इम्पैक्टेड. देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड. बीओपी क्राइसिस होता है तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कर रहे होते ना उस टाइम, आप फॉरेन करेंसी दूसरे कंट्री से ले रहे होते हो. बैलेंस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होती ना उस टाइम. व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ा हुआ है, वो आप, और उसके लिए आप पैसे बोरो कर रहे हो. इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट गेट अफेक्टेड. बैलेंस ऑफ पेमेंट गेट अफेक्टेड व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो ए 227 का ए. लेट्स गो टू 228. Which of the following are the methods of parliamentary control over public finance in India? This is a good question. 227 का A is the answer. B नहीं, A. Which of the following are the methods of parliamentary? A. Why not 4? 4 क्यों नहीं है? Four is not there because we do not have any parliamentary budget office. This is a recommendation. Various expert committees have said कि बजट को बीच में रिव्यू करने के लिए we should create an autonomous independent body called parliamentary budget office, but it hasn't been created. In some other countries it's there. In India we do not have such body. So if this body comes into play, then fourth would have been correct, but right now we do not have such kind of body. That's why 4 is wrong and 1, 2, 3, 5 is correct. And this was a good question because it was based on something जो ना मेंस के टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं कि बजट पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इंप्रूव करने के लिए व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी कैन डू. वन ऑफ द सजेशन वुड बी दिस थिंग. गॉट इट? ओके. प्लीज एक्सप्लेन ऑप्शन 3. प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट. अरे सिंपल ना, ये बोल रहे हैं कि यार गवर्नमेंट को कोई भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उन्हें पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है ना. दिस इज द वे इन विच पार्लियामेंट, which of the following are the methods of parliamentary control over public finance? This is a way in which parliament is controlling public finance, right? Let's go to 229. So 228 ka what is the answer? A is the answer. Most of you said A but you did not know the reason. ऐसे तुक्का मार दिया. ध्यान रखो इसको, because they may ask you this question again, because even now it is discussed, experts suggest that this should happen. 229. Which of the following statements appropriately describe fiscal stimulus?
Sir, if CAG is there in option 4, CAG नहीं, अगर estimate committee है, estimate committee in a way plays that role. Estimate committee was there, then it would have been. Let's talk about 229. Fiscal stimulus क्या होता है? Simple. Government spending money, more money to revive the economy. It's an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country. This is simple, right? 2000 कल भी when we were looking at 2011 questions, those were easy, and we were thinking we should have been born 12-13 years earlier, right? It was this time only. 229A, 230. Why is the government of India disinvesting its equity in the central public sector enterprises? PSUs में why is government doing disinvestment? बोले A, B, C, D. B for boy. D for dog. Dog. Why are you saying B is correct? The government no longer intends to retain management. Government जब disinvestment कर भी रहा है, it's ensuring in many other cases the government continues to have more than 50% of the share, है ना? In some of the companies it has पूरा बेच दिया है, but not in in case of every company. Okay, so D should be the answer. 230, D should be the answer. 231. 231. यार ये पता नहीं, इट्स ओनली शोइंग वन वॉचिंग. ऑनलाइन बच्चे एक्टिव रहना, आप लोग मुझे पता रहे कि बच्चे देख रहे हैं. वन तो मैं ही वॉच कर रहा हूँ. नहीं, I have it open. 231. All revenues received by Union government by way of tax and other receipts for the conduct of government business are credited to Consolidated Fund of India. है ना? ये तो 2011 में ही एग्जाम देना था ना, राइट? मनन बोल रहा है वो तो मैं भी क्वालिफाई करता. हाँ, अब भी होता है. 232. Which one of the following is not feature of value added tax? Which one of the following is not a feature of value added? बताइए. अभी समझाया था ना, वैल्यू एडेड टैक्स कौन इंपोज करता है? स्टेट. डी स्टेट इंपोज कर रहा है. बाकी देखो, जब व्हेन वी केम टू जीएसटी, नो, it is said that GST is the logical conclusion of VAT. Why do we say that? We say that because it was originally in VAT where we introduced everything. जैसे वो GST अभी लगता है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, समथिंग लाइक देयर वाज देयर फॉर वैट. कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग इन केस ऑफ वैट. It was a destination based tax. VAT was a destination based tax. This is GST is a destination based tax. It was an indirect tax, तो फाइनल बियरिंग कंज्यूमर ही कर रहा है. जीएसटी में भी फाइनल गवर्नमेंट कल जीएसटी बढ़ा दे तो आपकी फीस बढ़ेगी ना, फाइनल बर्डन आप पे जा रहा है. अभी यू पे 18% जीएसटी, गवर्नमेंट इंक्रीजेस टू 28%, यू विल हैव टू पे दैट. तो 1, 2, 3 आर ऑल करेक्ट. दैट वाज द केस विद वाज द केस विद वैट आल्सो. बट फोर्थ वन, वैट कौन इंपोज कर रहा था? अभी आई टोल्ड यू, स्टेट. यस, देयर वाज अ सेंट्रल वैट, वो अलग है. यहाँ पे सिर्फ जब वैट बोल रहे हैं तो इट वाज सेल्स टैक्स. सर्विस टैक्स इज डिफरेंट. नहीं ना, सर्विस टैक्स वाज डिफरेंट. 1990s में इंट्रोड्यूस सर्विस टैक्स. इट्स अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बी बोर्न बाय कंज्यूमर. देखो, सर्विसेज को भी जब बेच रहे हो ना, वहां पे देयर मे हैव बीन समथिंग कि वहां पे कुछ गुड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दे मे हैव गिवन दैट.
but D for sure is wrong. D is 100% wrong. So D. Okay. It's a multi-point destination based system of multi-point, जैसे GST में होता है ना, ऐसे समझो. In GST what happens? कि you first bought, let's say I have to make this, what do we call this? Podium. Dice. Podium तो ये होता है ना? हाँ, dice. We have to make this dice. So first wood would be made by someone. They will sell it. Will pay sales tax वहाँ लगेगा. Then someone will add some other value. So some sales tax has already been paid. So that sales tax will be refunded, input tax credit, and those. So multi-point and not tax on tax, no cascading effect. Something like that which happens for GST also. उसके cascading effect prevent करने के लिए multi-point destination based tax. Got it? So D should be the answer. 232, D should be the answer. Let's. अभी भी तो वही होता है ना GST. Multi-point का मतलब क्या है? Let's say this is the raw material one, है ना? You sold it, VAT लगा. So it was of 100 rupees. After VAT, let's say it has become 110. After VAT, now you will do some activities on it, and let's say you did activities and of 80 rupees. आपका service is of 80 rupees. आपका improvement is of 80 rupees. So now you will sell it in 190 rupees. But अब 190 rupees के ऊपर VAT लगेगा. But people would say कि sir, this 190 rupees is not the value of this product. इसमें VAT is already there. 10 rupees of VAT is already there. Now you are imposing VAT on VAT. This is leading to unnecessary increase in price. So what would happen is, rather than imposing VAT on 190 rupees, वो आपको 10 rupees का credit दे देंगे कि 10 rupees tax you have already paid, and on the remaining 180 rupees you pay VAT further. So multiple points पे tax लग रहा है, but eventually all these taxes, who will pay for it? The finally someone who will buy this podium, dice. What was it? Dice. Finally someone who will buy this dice will be paying it. Are we getting it? Indirect tax का तो यही होता है ना, finally consumer bears the burden. Got it? So let's come to 233. Who's responsible for preparation of budget? Today you people are learning a lot of things. B. Department of Economic Affairs. अब now it's factual, इसका कुछ कर नहीं सकते, but B is the answer. You should know that. PYQs में तो आए हुए हैं तो इतना तो पता होना चाहिए. It's responsible. 234. 234. फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल होगा? डी. अच्छा, आपका नाम क्या है? हिमांशु. हिमांशु इज सेइंग बी. ओके, हिमांशु सेज बी. C. What's your name? Devang. Devang is saying C. B and C. Other than B and C, any answers? A. D. Acha. Nice. A, D. We have all the options. Chali, let's understand it. Dekho, we have to control fiscal deficit. So we have to increase our revenue and reduce expenses. So when we sell or offload shares of public sector, do we get revenue? This should be there in the answer. 4 should be there in answer. So A तो A किसने बोला है? A you could have eliminated. Who said A? A should have been eliminated easily. This investment increases government revenue. It will reduce fiscal deficit. हाँ? Fiscal deficit. देखो disinvestment no. Every year government keeps some target of disinvestment.
right? Downsizing of bureaucracy. If we downsize bureaucracy, will government expenditure reduce? He should also be there in the answer. So 4 should also be there, 3 would also be there. We are left with only C. किसने बोला था? Downsizing bureaucracy. उन्होंने क्या सोचा वो बता नहीं रहे, आप बता रहे हो. उन्हें बताने दो देवांग. इतना नहीं सोचते हैं. प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल, देखो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IIMs, उसमें ना गवर्नमेंट डज नॉट अर्न मनी, गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी. ऐसा बोला जाता है ना कि द फी दैट यू पे एट एन IIT is a fraction of what government spends on. So government is spending all that money. If that is privatized, government का expenditure reduce होगा. 2 should also be there. We are left with B. We are left with B. Right. So in this question, answer should have been B. But if there was an option of 1, 2, 3, 4, we could have also gone for. Why? Because if FDI increases in country, will tax revenue increase for government? Microsoft आके यहाँ पे सेंटर खोल रही है, टेस्ला आके यहाँ पे सेंटर, FDI आ रहा है, उससे फ्यूचर में टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का? नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? तो if there was an option of going for 1, 2, 3, 4, we would have gone for that. But यहाँ पे as per what we have, 2, 3, 4 should be the. हाँ काफी लॉन्ग रन की बात है, डेफिनेटली काफी लॉन्ग रन. देखो एक तो काफी लॉन्ग रन भी मत सोचो, ऐसे सोचो समवन कम्स विथ $10 billion टुडे, व्हेन ही इन्वेस्ट $10 billion, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मटेरियल आ रहा है, उन सब पे टैक्स लग रहा है ना. तो दैट FDI इज एडिंग टू गवर्नमेंट्स इनकम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर. कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां कम किया? नहीं, दैट्स नॉट रिड्यूसिंग कैपिटल. यू कैन कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशन. ये तो जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर, और कर भी सकते हैं. मतलब पूछा ये है कि बाय व्हाट मींस कैन यू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, तो इवन बाय रिड्यूसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इमीडिएटली तो वो रिड्यूस हो सकता है, बट दैट्स नॉट द आर्ग्यूमेंट हियर. एनीवेज, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज B, 2, 3 and 4. But if we had an option of all 1, 2, 3 and 4, we could have also gone for that. Okay, so 234 का answer would be B. Everyone, online students have also been confused. B, C, different answers have been given. कोई बात नहीं. तो देखो through this we are fiscal deficit कैसे कम होगा, इस पे ना multiple questions have been asked, and as we practice more questions in examination, our life would be very easy. When you will get fiscal deficit, array I know this. And that's why it is said that PYQs are the most important part for your preparation. आप ना कोई किताब उठा के पढ़ रहे हो, कुछ नया उठा के पढ़ने लग जाते हो, नहीं. बेसिक सोर्स पढ़ो, PYQ करो, and then in your basic source just add concepts from PYQs, जो आपके बेसिक सोर्स में नहीं होगा. Okay, let's come to 235. Which of the above action can be considered part of fiscal stimulus? देखो वापस से fiscal stimulus. Sometimes they are asking you the meaning of fiscal stimulus. Meaning of fiscal stimulus was affirmative action by government to revive the economy. That is increased expenditure by government to revive the economy. That is fiscal expenditure. Which of the above can be considered part of fiscal expenditure? Fiscal stimulus. If we cut tax rates, will more investment come? Yes, this could be. तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया, बट दैट इज समथिंग. इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस. अबॉलिशिंग सब्सिडीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन. इफ वी रिड्यूस सब्सिडीज, व्हाट मे हैपन? a lot of things may become unviable, a lot of activities may become unviable, and this is not part of stimulus. It may be part of fiscal consolidation. When we have to reduce fiscal deficit, then we will reduce subsidies. But when we have to economy को improve करना है, we will give subsidy. We will tell industries, you set up a plant here, I'll give you 1 crore rupees.
stimulus to revive economic activity. Got it? So what should be the answer? 1 and 2, A. No, fiscal stimulus में अभी नहीं. Fiscal stimulus में rationalizing could also have been taken negative. You try to give subsidy at that time. You try to give subsidy. Okay. 236. So 210 should have been written open. This 2010 is just the year in which the question was asked. Huh? Don't get confused. बोलो बोलो बोलो, भूल गए? मैंने क्लास में तो पढ़ाया है ये. I have exactly gone through union list, उसमें कौन कौन से taxes हैं, state list उसमें कौन कौन से taxes हैं. Then I have also gone through all the amendments, who levies what tax. While I was teaching it, you people were like, क्या पढ़ा रहे हो सर? देखो, I teach things based on PYQs. In my teaching, there's a lot of emphasis on यार UPSC किन areas पे focus कर रहा है. And that is why वो पूरा एक क्लास गया था जहाँ पे we talked about various taxes, various constitutional provisions and how tax distribution has evolved over the years. 80th amendment, later amendments, how things have happened. And we had noticed two things वहाँ पे. एक चीज जो हमने बोला था कि there is only one tax जो कि is levied by center but is collected and appropriated by state. That is वो stamp duties वगैरह वाला tax था ना, वो वाला. It is levied by center but collected, and I had emphasized it on it. तो STT एंड ये तो इज लेविड बाय सेंटर एंड इज कलेक्टेड बाय सेंटर. स्टेट्स को अप्रोप्रिएट नहीं होता है. ओके, तो कलेक्टेड बाय स्टेट, नो दिस इज रॉन्ग. तो आंसर इज 1. ओके, रिवाइज योर नोट्स. डिड यू नॉट रिवाइज योर नोट्स बिफोर कमिंग टू द RTFQ? टैक्सेस वाला सेक्शन रिवाइज करना था ना? नहीं, डिड नॉट रिवाइज. शुड हैव रिवाइज्ड. ओके, 237. 237. बताओ. Still life. सोचो. C और D, how will you mark this? In bubble, आधा bubble C का भर देना, आधा bubble D का भर देना, है ना? Examiner would give you half marks. Give me one answer, C or D. अंशु, D. देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस जिस पे लेवी हो रहा है, जिस पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम जगह पे होना चाहिए. ओके, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन में यू आर सेलिंग और बाइंग सिक्योरिटीज and you have to pay taxes. Burden is on you. Interest tax, you are earning interest income and they then pay tax. So it is fringe benefit tax. Again, यहाँ पे corporate sector पे होता है. जैसे ना, what is fringe benefit tax? ऐसे समझो, what corporate sector was doing, क्यों fringe benefit tax लाया गया था, इसको समझो. Corporate sector or businesses, what they were doing is they were giving you a lot of benefits in the name of benefit, not in the form of salary. तो ना इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ रहा था आपको उस पे. तो योर सैलरी component was getting lesser and these benefits were getting higher. So you're not paying any taxes, you were happy. Government said nahi, all these things, all these fringe benefits would also get taxed. Would also get taxed. तो वहां पे fringe benefit tax लाया. So this was also direct tax. This was not indirect tax. This was also a direct tax, but this has been abolished now. It was brought for a few years, but it was very confusing and it was abolished. But still, fringe benefit tax is a direct tax. Got it? So D is the answer. C or D nahi? D. 238.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सर्विस टैक्स इज एन, अब देखो सर्विस टैक्स तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, जीएसटी हैज कंप्लीटली सबज्यूम्ड सर्विस टैक्स, बट व्हेन सर्विस टैक्स वाज देयर, टी टी अच्छा, ए कितने लोग बोल रहे हैं? बी, बी, बी इज द आंसर. ओनली वन ऑफ यू इज आंसरिंग बी. व्हाट्स योर नेम? दुष्यंत. एक ही बच्चे ने सही किया है. चलो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज सर्विस टैक्स इज नॉट देयर, बट सर्विस टैक्स सेंटर लेवी कर रहा था. सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स स्टेट लेवी कर रहा था भाई, सर्विस टैक्स सेंटर लेवी कर रहा था, एंड इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स. इवेंचुअली तो कंज्यूमर पे बर्डन पड़ा. होटल सर्विस टैक्स दे रहे थे, बट इवेंचुअली पैसा किसको देना पड़ता आखिरी में? एंड कंज्यूमर को. हम सर्विस टैक्स देते गवर्नमेंट को, जैसे हम जीएसटी भरते हैं गवर्नमेंट को, कहां से आता है पैसा? वो जीएसटी आपकी फीस से तो आ रहा है. तो इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स इनडायरेक्ट टैक्स. सर्विस टैक्स वाज एन इनडायरेक्ट टैक्स. आप, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट माय स्टूडेंट्स? पहले ये बताओ. बहुत सारे लोग हैं. आप लोगों ने टैक्सेशन पढ़ा नहीं है मेरे से, है ना? एक ना किसी दोस्त से बस टैक्स वाला नोट्स मांग लेना, टीएमपी या जीएस फाउंडेशन वाले, बिकॉज टैक्स वाले सेक्शन में आप लोग सब बहुत गलतियां कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आई स्पेंट लाइक एंटायर 3 आवर्स जीएस फाउंडेशन में, तो मैंने 3 घंटे पूरा टैक्स पे ही, एवरी एस्पेक्ट ऑफ टैक्स. व्हाई डिड आई डू दैट? बिकॉज मैं पढ़ाने से पहले हमेशा किस पे फोकस करता हूँ? पीवाईक्यूज पे. यूपीएससी ने कहां से क्वेश्चंस पूछे? व्हाइल बुक्स एंड ऑल विल नॉट एम्फसाइज अ लॉट ऑन दैट, बिकॉज उनके लिए इकोनॉमी के इंटरेस्टिंग चीजों पे सवाल बनाना है. फॉर मी योर प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई हैव एम्फसाइज्ड अ लॉट ऑन दिस. प्लीज रिवाइज इट. आपकी प्रिपरेशन देख के लग रहा है कि ये टैक्स वाला सेक्शन आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा. एवरीथिंग एल्स इज फाइन, एवरीथिंग एल्स इज ग्रेट, बट ये टैक्स वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ना है. बेसिक्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाउ टैक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. आई हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स वेरी थॉरली. अगर आपके पास, आप यू आर इन कॉन्टैक्ट विद सम स्टूडेंट हु इज पार्ट ऑफ हमारा जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम, आई हैड कवर्ड दिस थिंग इन अक्टूबर इन डिटेल, जीएस फाउंडेशन क्लास. वहां से लेके it will take 2-3 hours maybe, but all these concepts would be very clear. Okay, so answer here should be, it's an indirect tax levied by central government. Answer should be B. 238 answer should be B. Let's go to 213. अच्छा 238, ये 28 क्यों लिखा है यहाँ पे? एक्स्ट्रा आ गया. चलो ये 28. Let's answer this. Which one of the following statement is correct? Fiscal Responsibility Budget Management Act concerns, it concerns both fiscal deficit and revenue deficit. C should be the answer. Okay. Let's come to 239. 239. अभी बताया था मैंने. Levied by central government and collected and appropriated by state. This was the only exception. है ना? So what should be the answer? D should be the answer. 239 answer should be D. 239 answer should be D. Stamp duty is a form of tax that is levied on documents. It is levied by union or the central government and is appropriated by, collected and appropriated by state government. This is part of entry 91 in the union list. Okay, let's go to 240. Debt trap क्या होता है? Recently the term debt trap has been in news a lot. So they may ask this thing again, and then people would come and say PYQs are important. पहले पूछा हुआ है वो. Why not BCD? Because BCD नहीं है. देखो डेट तो देखो इंडिया भी डेट ले रही है, बट इंडिया इज नॉट इन डेट ट्रैप. डेट ट्रैप तब होता है जब आप डेट ले रहे हो एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ रिड्यूसिंग द डेट. व्हेन यू आर टेकिंग डेट टू पे प्रीवियस इंटरेस्ट, प्रीवियस प्रिंसिपल नहीं, प्रीवियस इंटरेस्ट. तो प्रीवियस प्रिंसिपल रिमेन एज सच, उसका फिर से नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट आ जाएगा एंड देन यू हैव बोरोड मनी, तो प्रिंसिपल डेट हैज इंक्रीज तो मोर इंटरेस्ट, तो यू आर फॉलोइंग इन दैट ट्रैप. So A would be the answer. 240, A would be the answer. 241.
241. टू 239 का यार 230, एक थोड़ा सा वीडियो में पीछे चले जाओ ना, दैट्स द एडवांटेज ऑफ वॉचिंग इट लाइव. 241. बताइए. डी, सेइंग डी. डी, ए, सी भी बोलो, एक कोई समवन से सी. नो वन विल से सी. सी इज द आंसर. How can one be correct? External liability reported in the union budget are based on historical exchange rate. अभी जब हम बोलते हैं हमारा डेट इतना है, do we consider exchange rate of 1950? हम आज के when we say our debt is 10 लाख करोड़ रुपीस, अब वो डॉलर में है, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके बोल रहे तो आज के रेट को, आज का एक्सचेंज रेट कंसिडर करोगे ना. Why would you consider historical exchange rate? Why would you consider historically? What is the point of कि 1980 के एक्सचेंज रेट के बेसिस पे हमारा डेट इतना है. No one is going to take your debt, take your money back based on 1980 का एक्सचेंज रेट ना. Right? One is wrong. That solves your question. इंटरेस्ट पेमेंट इज, दैट इज ट्रू. अब मैंने बजट पढ़ाया, बजट में एम्फेसाइज किया था, देखो बजट में पाई चार्ट बनाया था. इंटरेस्ट पेमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन. हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो बात होता है इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है. आप जब डेट को वापस पे करते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली, और नॉन प्लान्ड ही है. अब तो सब नॉन प्लान्ड है, मतलब नाउ देयर इज नो प्लानिंग, बट इवन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होते थे, नए प्रोजेक्ट्स पे जो पैसे लग रहे हैं, सैलरी पे, इंटरेस्ट पे, वो सब नॉन प्लान्ड ही है. तो 4 इज करेक्ट, फॉर श्योर करेक्ट. क्या मतलब सबने बाकी सब बता दिया, करेक्ट आंसर नहीं बताया. ऑप्शन 2, द कंटिन्यूड हाई बोरोइंग हैज केप्ट द रियल इंटरेस्ट रेट हाई इन द इकोनॉमी. देखो, when you keep on borrowing money as your debt keeps on increasing, what happens? Debt keeps on increasing, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है. Why would it go up? Why would it go up? जैसे किसी के ऊपर डेट ज्यादा है, the interest rate charged by your credit rating would suffer, interest rate charge would be higher. Okay, तो आंसर would be C, 2, 3 and 4. 241 का C, 241 का C. 242, जल्दी नहीं बोलना है, सही बोलना है. अब जिसने सबसे पहले आंसर किया और गलत किया वो मुर्गा बनेगा, याद रख, मजाक नहीं कर रहा. बी, मनन ने बी बोला है सबसे पहले, अब बाकी सब लोग अटेम्प्ट. इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम इज इनडायरेक्ट, एक्साइज इज इनडायरेक्ट. बी, राइट. बी, यस बी. 242 बी. 243, तुम फिर बी और डी करने लगे, एक आंसर देना है. हाँ, कौन सा, पिछले वाले क्वेश्चन में? बी, बी फॉर बॉय. Term explanation match the following question. This is a question of 2001. Some of you were not born then. है ना? बताइए. Fiscal deficit.
A3 fine, budget deficit B1 is fine, revenue deficit, excess of revenue ठीक है, C2 is fine, primary deficit, excess of total expenditure over total receipt, less borrowing and interest. हाँ, that should also be okay. अगर हमें इनमें ही मैच करना है तो this is the most appropriate definition. Yes, A. Is everyone comfortable with A? Okay. 243, A should be the answer. Why is Arivalan saying C? Achha, he deleted it. 244, consider the following. Which of these are components of internal debt? All are component of internal debt. No? Government is borrowing from market, government is borrowing through treasury bills or special securities issued by RBI. All are component of internal debt. Fine, D. 245. 245. नहीं, that's not monetization. No. देखो, special securities issued by RBI sometimes क्या होता है ना, I do not recall, but जैसे ना अब ऑयल बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहे हैं या कुछ और, तो वो इशू RBI कर रहा है, बट हाँ मार्केट से, हाँ उन सब में आता था, तो इशू RBI कर रहा है, बट द मनी इज कमिंग टू गवर्नमेंट फ्रॉम पीपल, इशूड टू RBI. हाँ, तो इट मे बी द डेफिसिट वाला पार्ट, मे बी डेफिसिट फाइनेंसिंग. 245. 245. Which one of the following statements regarding the living in again taxes? आपको देख रहे हो टैक्सेस पे कितने सवाल आए हुए हैं? आर्टिकल 269, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 270, आर्टिकल 271, सब मैंने क्लास में पढ़ाया था, पूरा एक्सप्लेन करते हुए कौन सा टैक्स किसके पास रह जाता है, कौन सा टैक्स बढ़ता है. इनकम टैक्स इज लेवीड बाय सेंटर, कलेक्टेड बाय सेंटर, बट देन जो सेंटर अपना 41% टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ना अमंग स्टेट्स, इनकम टैक्स इज पार्ट ऑफ दोस. So A is the answer. 245, A is the answer. 246. 246. बताइए. C. B. Okay, C and B. Anything else? A. A for apple. D. D for dog. Okay. B C D तो हो गया. निशा से A बोल दो. मनन तो फिर तुम्हारा भी A ही है ना? A नहीं है. 246 क्वेश्चन समझ नहीं आया, अभी तो आंसर नहीं हो पा रहा है. देखो, अच्छा, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बजटरी डेफिसिट? व्हाट इज इट? एंड इट इज जनरली जीरो. बजट, टोटल बजट का एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट का रेवेन्यू, वो जीरो होता है. रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इसमें आप बोरोइंग को कंसिडर नहीं करते हो. जो बोरोइंग वाला अमाउंट है दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट.
बट वो बोरोइंग के बाद वो बोरोइंग हैज बिकम रिसिट. इवेंचुअली बजट में whatever you spend, you'll have to arrange that money. So budgetary deficit generally remains zero and fiscal deficit is higher. Right? So statement 1, fiscal deficit is the borrowing, fiscal deficit is greater than budgetary deficit. That is true. A is true. Fiscal deficit is the borrowing from the Reserve Bank of India plus other liabilities of government to meet its expenditure. That's also true. है ना, उस टाइम तो आरबीआई से बोरोइंग हो जाती थी. टुडे वी आर नॉट अलाउड टू, अनलेस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वी आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली बोरो फ्रॉम आरबीआई, बट उस टाइम हो जाती थी. फॉर दैट टाइम आर इज ट्रू, है ना, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यू हैव टू प्रोवाइड कि भाई एक्सप्लेनेशन वुड हैव बीन दिस इज एक्स्ट्रा बोरोइंग दैट्स हैपनिंग. राइट? तो सम ऑफ द सोर्सेस हैव मेंशन्ड द आंसर टू बी ए. उस टाइम यूपीएससी आंसर की देता नहीं था, बट एज पर मी दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आंसर वुड बी बी. ओके, आंसर वुड बी बी. अच्छा, प्रदीप इज सेइंग सर प्लीज एक्सप्लेन फिस्कल डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट वन. देखो इतना टाइम नहीं है, फिर भी ब्रीफली समझा देते हैं. सपोज I have some planned expenditure and I have some planned revenue source. The level up IS की बात करते हैं. Let's say इस साल का expenses हमारा 5 CR है and the revenue that we estimate is 4 CR. Revenue that we estimate is 4 करोड़ का और हमारा expenditure 5 करोड़ का. So 1 crore will have to borrow. This 1 crore is our deficit, fiscal deficit. This 1 crore would be fiscal deficit. Got it? So fiscal deficit basically tells you how much do you need to borrow and we refer it as a percentage of GDP. हमारा GDP का कितना percentage होगा ये deficit. Okay, but when it comes to budgetary deficit, now budgetary deficit is how much expenditure do we have? 5 crore. How much receipt did we get? तो 4 crore तो revenue आया था, 1 crore हमारा loan आ गया. इन दोनों का difference. तो budgetary deficit is, planning में आपका budgetary deficit 0 होता है. अगर आपके पास कोई पैसे लेने का तरीका नहीं है तो आप उसे स्पेंड भी नहीं करते ना, स्पेंड करने का प्लान नहीं करते हो, तो बजटरी डेफिसिट 0 होता है. एंड दैट्स व्हाई फिस्कल डेफिसिट इज हायर देन बजटरी डेफिसिट. आई होप प्रदीप यू अंडरस्टूड इट. लेट्स गो टू 247, क्वेश्चन नंबर 247. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 240. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स was introduced in the budget of the government of India for the year. किस ईयर के बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था? डी 96-97. हाँ, जो 96-97 का जो बजट आना था वो बजट पहले आ गया होगा 95-96 में. बजट तो 28 फेब को आ जाता था ना. इट केम इन 95-96, बट फॉर विच ईयर्स बजट? 96-97. तो D would be the answer here. Okay, 247, D would be the answer. 248. जल्दी नहीं करना है, ध्यान से. Did I explain this? है ना, कल ही किया है ना, फिर गलत कैसे कर रहे हो? मनन, what is your answer? B. B is the answer. Progressive taxation is, किसी का इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसका इनकम कम है उस पर कम परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा. दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. तो गरीब आदमी के ऊपर हम 0 टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स, है ना. जिसका इनकम अप टू 10 लाख है उस पर 10% लगा दिया, जिसका इनकम 50 लाख है उस पर 30% टैक्स लगा दिया. दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. राइट? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज प्रमोटिंग इक्वालिटी. अब प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर क्या होगा? प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर वुड मीन द सेम थिंग. समवन हु इज अर्निंग लेस, उस पे गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग लेस. समवन हु इज अर्निंग मोर, उस पे गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग मोर. तो विल प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर promote equality? No. Promote redistribution? No. Regressive expenditure. Regressive expenditure क्या होगा? Someone who's earning less, उस पे you are spending more. Expenditure is more. Someone who is earning more, उस पे you are spending less.
तभी तो इनसे ज्यादा पैसा लेके आप गरीबों में स्पेंड कर रहे हो, तब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, राइट? तो बी इज द आंसर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। गॉट इट? ओके, 249, 249. Let online students answer this, guys. People who are online, सब लोग आंसर करिए, मुझे पता तो लगे कितने बच्चे देख रहे हैं। यहाँ तो देयर इज सम प्रॉब्लम द लाइव नंबर्स है। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स शुड आंसर। नो वन इज आंसरिंग। टी ए one student has said A, most others have said C. The most students coming for answering C. Yes, C is the answer. Corporate tax is like income tax. Corporate tax ना एक type of income tax ही होता है, businesses पे income tax लग रहा है. Income tax is levied by center, appropriated by center, but distributed between both center and collected by center and distributed between center and state. But कुछ income tax state levy कर सकता है, कौन सा? Agriculture income. The right to levy agriculture income tax is with state government, but corporate income tax नहीं. Okay. तो C is the answer. 250. 250. Which of the following are among the non-planned? फिर से non-planned देखो. Repeated questions. नहीं, slightly different option. बताओ बताओ। D. देखो 1 to 4 तो आर डेफिनेटली नॉन प्लान्ड, अभी तो पढ़ा था, डिफेंस एक्सपेंडिचर समझाया था ना, सैलरी वाला, वो सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, इन सब में कहां बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, प्लान्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए हो रहा है। 1 to 4 आर डेफिनेटली, तो आंसर शुड बी डी। You should have said, sir, answer is D, but please explain statement 3. The question should have been that. You're not saying answer to be D. Answer is D. अब ना जब हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि इस 5 ईयर प्लान में जो प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है, उस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर. बट सम एक्सपेंडिचर मे बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द प्रीवियस 5 ईयर प्लान विच कुड नॉट बी कंप्लीटेड. तो इस प्लान में उसे हम नॉन प्लान में रखते हैं. इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस 5 ईयर प्लान, तो दैट एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इज स्टिल कंसिडर्ड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. Are we clear about this? Did you understand the reason for it? Okay, let's go to 251. I'm sorry. Let's go to 251. कुछ डाउट है बच्चों को, सर लेवीड एंड अप्रोप्रिएटेड में डिफरेंस बता दीजिए. लेवी का मतलब है, देखो, पावर टू लेवी इज यू कैन इम्पोज दैट टैक्स, है ना. अब एक तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकता है, लेवी. बट पावर टू कलेक्ट इज हु विल कलेक्ट दैट टैक्स. जैसे आईजीएसटी की बात करते हैं, आईजीएसटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट हु कलेक्ट्स आईजीएसटी? सेंटर. आईजीएसटी कलेक्शन की पावर किसी और की हो सकती है, एंड देन अप्रोप्रिएट इवेंचुअली वो जाएगा किसके पास? जैसे आईजीएसटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इनकम टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, corporate income tax is distributed between center and state, service tax used to be distributed between center and state.
Okay, so power to levy, collect and appropriate are three different things. जैसे when we talk about VAT, when VAT, जैसे VAT हम लगाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, who levies VAT? State. Who collects VAT? State. Who appropriates VAT? State. अगर state कुछ levy कर रहा है तो center does not take that money from state. Are we understanding this? Okay. चलिए, let's come to question number 251. 251. अच्छा, PYQs are done. Now some more areas that we are covering. अभी तक all the questions that we did, they were PYQs from government budgeting, fiscal policies and taxes. Okay, we have covered all the PYQs. Now other questions are coming. We'll solve 40-50 more questions and then we'll go to next topic. Next topic in the sense, उसके बाद हम external sector पे जाएंगे. Let's come to 251. What is the answer? C. Why is one wrong? हाँ, कंटिजेंसी है 267 में, है ना. 266 1 में कंसोलिडेटेड फंड है, आई थिंक 2 में पब्लिक अकाउंट्स है और 267 में कंटिजेंसी. वन इज रॉन्ग. ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड अदर देन दोज इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर हेल्ड इन पब्लिक अकाउंट. दैट्स आल्सो ट्रू. डरा दिया मुझे, है ना. तो व्हाट इज द आंसर? बी. बी इज द आंसर. 251 में बी इज द आंसर. 252. अरे वो कैसे आते हैं कैसे नहीं वो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं. यहाँ पे हम किस आर्टिकल में था वो देख रहे थे. ऑप्शन 2 का नहीं. कंटिजेंसी फंड में तो इमरजेंसी फंड होता है ना, वो वहां पे पब्लिक मनी नहीं जाएगा. पब्लिक मनी व्हाई वुड इट गो टू कंटिजेंसी फंड? कंटिजेंसी फंड में वैसे नहीं, आप इसमें जा रहोगे. 252. 252. सही. हम जिस साल के लिए बजट ला रहे हैं वो तो अगला साल है. तो वी एस्टिमेट दिस विल बी आवर रेवेन्यू, दिस विल बी आवर एक्सपेंडिचर. So it's a statement of expected annual receipts and expenditure of the government. Is the answer. Okay, in reality budget जब आता है ना तो तीन चीजें होती हैं. There are three data for 3 years. Current year, जैसे अब on what date does budget come? 1st Feb. जैसे इस बार जब 1st Feb को बजट आया, which financial year was going on? 23-24. We can call it FY. We can call it FY. This is current year. This is current year. Then next year and previous year. तो जब आप बजट में जाओगे ना 1st of Feb को, there will be 3 data. देखो, the budget was for the year 2024-25. So it will estimate for next year. Budget was for the year 2024-25. Though it came in the year 2023-24, 1st Feb 2024 is part of which financial year? 2023-24. So it came in 2023-24, though the speech was introduced, but it was for this year. The budget contains this, plus budget contains revised estimate for current year. Current year 2023-24 जब बजट आया था 1st of Feb 2024 को which year was going on? 23-24. 1st of April 2023 to 31st March 2024
इज द फाइनेंशियल ईयर 23-24। करंट ईयर के लिए इट गिव्स रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज क्यों? क्योंकि बजट के टाइम कुछ एस्टिमेट आया होगा पिछले साल, अब 10 months have passed, 11 months have passed, now you can give you can get revised estimate. And for the previous year it gives actual number, because previous year को complete हुए 10 साल हो गए, 10 महीने हो गए, so you can know exactly how much revenue had occurred, how much receipt had occurred, how much expenditure had occurred. तो अपकमिंग ईयर के लिए वो एस्टिमेट देता है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो एस्टिमेट देता है, करंट ईयर के लिए वो बजटेड और रिवाइज्ड एस्टिमेट देता है, एंड प्रीवियस ईयर के लिए वो एक्चुअल फिगर देता है। बजट में 3 सालों के बारे में बात हो रही है, इट कवर्स 3 डिफरेंट ईयर्स। ओके, 253 250 बताइए। ए है ना, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि भाई प्राइमरी डेफिसिट में हमें ये कंपोनेंट हटाना पड़ता है, दैट्स व्हाई प्राइमरी डेफिसिट वुड बी लोअर, फिस्कल डेफिसिट जनरली रिमेन्स हायर देन प्राइमरी डेफिसिट, राइट। क्योंकि क्या बोल रहे हैं हम, वी हैव केप्ट ऑन बोरोइंग एंड दस इंडिया लोन, क्योंकि इंडिया में डेफिसिट रहता है तो वी कीप ऑन बोरोइंग, तो एवरी ईयर आर लोन as well as our interest payment is positive. So what is primary deficit? Fiscal deficit minus interest payment. अब interest payment positive है तो fiscal deficit क्या, primary deficit क्या हो जाएगा? Less than fiscal deficit. If interest payment was negative, then primary deficit would have been more than fiscal deficit, but that's not the case here. Okay. 253 का answer is A. 254. कैपिटल रिसिप्ट बजट का क्या पार्ट होगा? 250 will not be, sorry, which of the following will not be considered part of capital receipt budget? आराम से सही बताना है, इनमें से क्या कैपिटल रिसीट बजट का पार्ट नहीं है? Any other answer? Ashwath is also saying C. बुलंद आवाज में बोलो, अरे बुलंद आवाज में बोलने की वजह सॉरी बोलने लगा। डी, बी फॉर बॉय। 1 2 3 रिकवरी ऑफ लोन तो इस पार्ट ऑफ कैपिटल बजट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल बजट? तो ग्रांट्स इन एड, रिसिप्ट फ्रॉम, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू, राइट। ग्रांट्स इन एड जो मिलते हैं, इट डज नॉट create any liability, does not reduce any of your asset, so it is what? It is revenue receipt. 1 2 3 are revenue receipt, not capital, so answer would be 1 2 and 3, because not पूछा हुआ है, answer would be B. Answer would be B. 254 का answer would be B. 255 GST तो बेटा टैक्स है ना, टैक्स इज रेवेन्यू रिसिप्ट। यू आर अ जेम सर, थैंक यू। कौन सा महंगा सस्ता बताओ, इसमें किडनी विडनी बेचो, ऐसे मिल जाए 200-400 करोड़ रुपए, नहीं? चलिए 255 गिफ्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, ग्रांट्स रिसिप्ट, एक्साइज ड्यूटी, रेवेन्यू रिसिप्ट,
What? D. D for dog. All are revenue receipt. Fine. 256. अब आते हैं, आपने इस साल का बजट पढ़ा है कि नहीं? A gem hold on to. अबे मेरे को ज्यादा होल्ड ऑन करके मत रखो, सिलेक्ट हो और निकलो, है ना? ओके, 256. Pradeep is saying, sir, if possible, please take one live class on important terminologies of economics. यार अभी ना मेरा कमिटमेंट प्री तक डिफाइंड है बहुत. I'm not finding even a single day for anything else. Say I'll be taking 4 RTFQs Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday में I'll make your समीक्षा का paper. I have started doing this. I ensure that सारे क्वेश्चन मैं रिव्यू करूं और खुद से कुछ जितने बना सकता हूं उतने मैं खुद बना रहा हूं. देन नेक्स्ट वीक एनवायरनमेंट के वो आ रहे हैं, फिर मुझे करंट के जो भी एज आई प्रॉमिस्ड ऑल माय स्टूडेंट्स, जो भी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मेरा स्टूडेंट है उसे कोई और सोर्स टच नहीं करना है. मेरी जिम्मेदारी है टू स्टडी एवरीथिंग एंड आपके पास आपके नोट्स में सब रहेगा. यू जस्ट रिवाइज वन सोर्स, जस्ट रिवाइज वन सोर्स, नथिंग एल्स. जो भी जैसे भी पढ़ना है वो मेरी जिम्मेदारी. तो आई हैव ऑल दोस कमिटमेंट्स, आई विल नॉट बी एबल टू मेक न्यू कमिटमेंट्स ऑफ टेकिंग अनदर economy class on terms and these things. Okay, I'm really sorry for this. हाँ, साइंस एंड टेक का जो RTFQ बाकी वो तो डेफिनेटली करेंगे. साइंस टेक में विल इंश्योर दैट यू आर डूइंग मोर देन 600-700 क्वेश्चंस. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, वो मेरा कमिटमेंट है. साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी तीनों के RTFQ वाज माय कमिटमेंट. आई विल डेफिनेटली फुलफिल ईच ऑफ दोस कमिटमेंट. ओके, कम बैक. 256. Consider the following statements for the financial year 2023-24 as per the budget. Only one. Government of India's capital receipt is higher than revenue receipt. Expenditure on central scheme by Government of India is higher than expenditure on sponsors. बताइए क्या सही है? A. Only second is correct. Only second statement is correct. 256 का A. इसीलिए ना बजट पढ़ाते टाइम आई हैव एम्फेसाइज्ड ऑन सर्टेन पैटर्न्स. जैसे why is one incorrect? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल रिसीट इज हायर देन रेवेन्यू रिसीट. आपको याद नहीं है कैपिटल रिसीट वाज मच स्मॉलर. वो बड़ा सा बॉक्स बनता था. आई हैड शोन यू अ फिगर जिसमें there was a much bigger circle for revenue receipt and much smaller circle for capital receipt. और मैंने आपको emphasize भी करवाया था while teaching you. Please note it carefully. Our revenue receipt is way more than our capital receipt. Capital receipt में तो basically loan आता है और disinvestment वाले receipt आते हैं. वो इतना ज्यादा नहीं है. Expenditure on central sector scheme by government, यहाँ पे भी I had emphasized. वो बजट में एक ना बजट प्रोफाइल बताया था, उसमें एक्सपेंडिचर साइड में स्कीम्स पे जो एक्सपेंडिचर था उसमें सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर वाज मच लार्जर व्हेन कंपेयर टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. इनफैक्ट अगर आप चाहोगे आप लिख सकते हो कि फॉर 2023-24, वैसे नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. I'm again telling you, numbers are not important. I do not want you to know the numbers. I just want you to have broader understanding. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे, दैट इज मच हायर. अराउंड 14 लाख करोड़ रुपीस इट स्पेंड्स ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड अराउंड 4 लाख करोड़ इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. तो बहुत वेरिएशन है, इसका आइडिया होना चाहिए. आर वी गेटिंग इट? अगर ऐसा होता ना 5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ तो इट वुड हैव बीन ओके इवन इफ यू डिड नॉट. बट you should know where is in when it comes to schemes, where does government spend most of its money? Central government is spending most of its money in central sector scheme, and therefore 2 is correct. GST collection of government of India is higher than direct taxes. This is wrong. Income tax and corporate tax combined together is way more than GST. Direct tax में income tax और corporate tax दोनों आएगा ना, and it is way more than GST. Way more than GST. Got it? So 2 is correct. A general pattern, do not remember the numbers, but general situation आपको पता होना चाहिए ना. Got it? So what is the answer? A is the answer. 256, A is the answer. Sorry?
How many of the above statements are correct? So A is the answer. Second statement is correct, but only one statement is correct. 257. Just give me a second. Pranshu is asking, sir, money in saving account in banks comes under capital. बेटा अभी we are talking about fiscal, तो government के capital में क्यों आएगा वो? When you deposit money in bank account, it's not a receipt for government, no. If government will borrow that money in the form of loan from bank, then it will be government का capital receipt. Otherwise, why would that money be government's money? Okay, let's come back. 257. 257. Consider the following statement about capital receipt. May increase liability. B, na? B for boy. B for boy. Okay, great. 258. 258. क्या नहीं है, क्या गलत क्या है? Short term has, what is wrong? हाँ, it has to be returned in 90 days. हाँ, interest बढ़ जाता है, right? But in general, ways and means advances has to be returned in 90 days. Else you will pay higher interest. ऐसे तो कुछ भी has to हो ही नहीं पाएगा ना. ये नहीं करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, right? जैसे आपसे बोला जाए in India you cannot murder another person. You will say नहीं, you can murder, after that you will go to jail. It means you cannot murder a person. Otherwise you will have to pay penalty, otherwise you will have to pay fine. है ना? तो ways and means advances are for short term, has to be returned in 90 days, else interest rate goes up. So D would be the answer. D would be the answer. 258, D would be the answer. 259. Which of the following will form part of non-debt creating capital receipt? Please note it carefully, it's not capital receipt, it's non-debt creating capital receipt. Multilateral loan, bilateral loan, it will create debt. Recovery of loan is non-debt creating. Disinvestment is also non-debt creating. C. 259 ka? Okay, okay, great. 260. 260. B. B for boy. Sure. तुम तो बोलोगे ही, उन्होंने बोल दिया ना. B. B is correct. Okay, B is the answer. 260. B is the answer. Let's go to 261. Let's go to 261. हाँ, बताइए. C. B. C और B. C.
पक्का? Who is saying B? Who is saying B? C would be answer. Both are correct. समझो इसे. Look at the statement. The ratio of revenue deficit to fiscal deficit broadly measures extent of borrowing used for financing current expenditure. Fiscal deficit is telling you about the entire borrowing. Revenue deficit is telling you about कि आपके current expenditure, not capital expenditure. Current expenditure पे क्या खर्चा हो रहा है? तो if I take a ratio of revenue deficit by fiscal deficit, if it's high, what does it indicate? It indicates that most of the fiscal deficit, most of the borrowing that you have made has gone for current expenditure. If it's low, it will indicate that most of the borrowing that has happened, it has gone for capital expenditure. Now look at the statement one again. Ratio of revenue deficit to fiscal deficit broadly measures the extent of borrowing used for financing current expenditure. है ना? ये ज़्यादा है तो current expenditure में the borrowing has gone more. ये कम है तो current expenditure में borrowing has gone less. It is roughly measuring that. Now, this is a statement I took from Economic Survey of India. Either 2022 या 23 के Economic Survey of India से statement लेके I had made this question. Sorry? 23 में है. हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? किसी एक Economic Survey of India में I had taken this statement. Got it? And high fiscal deficit may lead to crowding out of private investment. We know that. If government is borrowing a lot of money, then private sector will not get money to borrow and their investment may get crowded out. So C is the answer. 261 ka C will be the answer. Yeah, are we all able to understand it? है ना? देखो, when questions would be made, when new types of questions would be made, we have seen all the PYQs. Then ऐसा होगा ना? This is something that I've taken from Economic Survey of India. They will ask questions on these concepts. In case they ask questions on new concepts. If they ask questions on old concepts, we are done with that. Right? 261 answer would be C. Let's go to 262. Consider the following statements about fiscal situation in India. 262. Let answer of 262 come from online students. Guys, I need 20 answers before I go ahead. Come on. 262. I need more answers from online students. I've got only one answer, two answers. आप लोग बस हाथ उठाओ, ए किसका आंसर है? डी, 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 online everyone is saying B. All the answers so far among online student is B and the answer is B. Namaste. Fiscal deficit of Union government has kept on reducing in last 10 years. Not necessarily. COVID drastically increased the fiscal deficit. Now one for sure is wrong. Union government debt has been on an increasing trend. Debt, not percentage of debt, debt as a percentage of GDP. Debt. अब क्या हर साल हमारा डेफिसिट हो रहा है? Will we be borrowing more money? तो आपकी उधारी बढ़ती जाएगी. Debt has been on increasing trend. Even if it increases by 5 lakh crore every year, 1 lakh crore every year, it's on increasing trend. समझ में आई बात? If the question was Union government's debt to GDP ratio has kept on increasing, you could have said no. Because their GDP is also increasing, so debt to GDP ratio during COVID increased drastically, but after that it has been coming down. But here we just spoke about debt, not debt to GDP ratio. अब ऐसे समझो, suppose I am in debt, I have a debt of 2 crore rupees. Next year also I am in deficit. Will the debt increase? Next year also I am in deficit. Will the debt increase? So debt will keep on increasing. The government of India ka debt has kept on increasing. Got it?
So what will be the answer? B will be the answer. Let's go to 263. Question number 263. A, श्योर, बी। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, बी इनकरेक्ट पूछा था। बी, in the last 10 years highest debt to GDP ratio of states was reached in financial year 2020-21. Makes sense, सब गरीबी में जी रहे थे। One is correct. In the last 10 years the debt to GDP ratio has increased every year. It increased a lot, but debt to GDP ratio after COVID year has been coming down. Okay, so two is incorrect and question is about incorrect, so answer would be B. Got it? देखो बहुत डेटा याद नहीं रखना, पर जनरल पैटर्न तो पता लग ही रहा है ना। वी शुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। 264 Which of the following is not a feature of counter cyclical fiscal? C, है ना? During fiscal slowdown, we forget fiscal discipline, we spend a lot of money, we provide a lot of fiscal stimulus. C is wrong, right? 264 ka C is wrong. Not a feature, it is not a feature of counter cyclical buffer, the C would be the answer. 265. बताइए, सोचो। C. Manisha is saying C. What is Manan saying? हाँ, देखो एक आदमी कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका पता है कैसे लगता है? सब सेम गलतियां करते हैं, है ना? सही आंसर तो दोनों पढ़ के सही एक साथ मार्क कर सकते हैं, पर दोनों गलत भी एक साथ कर रहे हैं तो तुम कॉपी कर रहे हो। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, है ना? बताइए, व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे? आपने सी क्यों मारा था? मनन आपने सी, आपने, चलो आपने तो इस वजह से मारा था। मनीषा आपने सी क्यों मारा था? आर इज इनकरेक्ट। व्हाई इज आर इनकरेक्ट? फॉर इंडिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज अ फिस्कल मल्टीप्लायर ऑफ लेस देन 1, व्हेयरएज कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज अ फिस्कल मल्टीप्लायर। ये सही है ना? देखो फिस्कल मल्टीप्लायर क्या है, उसका इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरीज, व्हेन यू आर स्पेंडिंग 1 crore rupees, you are getting worth less than 1 crore rupees. But when you are spending 1 crore rupees on creating roads, capital expenditure, उसका positive impact is more than 2 crore rupees. And that is why we want कि revenue हमारा deficit खत्म हो जाए, so that जितना भी borrowing हो, it is going to capital. So when we'll borrow 1 crore rupee at an interest rate of let's say 8%,
but उस 1 crore रुपए का पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी विल बी हाउ मच, 2 crore. This borrowing is okay. इन जनरल कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ इन जनरल तो यहाँ पे फॉर इंडिया किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं बोला, इन जनरल बोला है ना. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज अ फिस्कल मल्टीप्लायर ऑफ लेस देन 1. किसी एक सैलरी के फॉर्म में नहीं बोले, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका फिस्कल मल्टीप्लायर इज, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली 3-4 टाइम्स भी है. हाँ कंपल्सरी नहीं है, बट प्लीज अंडरस्टैंड जितना अभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना उसका फिस्कल मल्टीप्लायर 2 से ज्यादा है. इसे कुछ कैपिटल का 5 टाइम्स है, कुछ कैपिटल का 1.5 टाइम्स है, बट ओवरऑल इट्स मोर देन 2. ओके, तो ए वुड बी द आंसर. आर यू गेटिंग इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो थोड़े नए तरह के क्वेश्चंस हैं. वी हैव डन अ लॉट ऑफ PYQs, वी अंडरस्टैंड दोस फंडामेंटल्स. नाउ वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीस कॉन्सेप्ट्स आल्सो. Got it? 265, A would be the answer. Let's go to 266. 266. B, C, D सब आ गया. Let's see answers of online students. What is online students? What are online students saying? 266 guys, please give your answers. I can see only 2 answers from online students. They're also C, D. C. हो गया. C, D, C, D लड़ना नहीं है आपस में. All are correct ना? Why are you saying C? Why is 2 not correct? देखो इंटरजेनरेशनल इक्विटी क्या है? If you will keep on borrowing a lot of money today, you'll enjoy your life chill, but your next generation will suffer by paying its interest. So FRBM Act tries to control your fiscal deficit. Thus, it is promoting intergenerational. This is one of the key objectives of FRBM Act. So answer is D. 266 का answer is D. Most of the students have said D. नहीं, पर कुछ लोगों ने C भी कहा है. Answer is D. नहीं, D है, D है. अभी भी C. Answer is D. 266 D. Let's go to 267. Take your time. मुझे भी read कर लेने दो. Which of the following best describe tax buoyancy? The responsiveness of tax revenue with respect to changes in GDP. Yes, change in tax over change in GDP is the buoyancy. B is the answer. 267 का B is the answer. Let's go to 268. 268. अब देखो buoyancy, elasticity इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, but these are important concepts. Through questions we should be able to understand these. 260. देखो what is, फिर से समझते हैं. What is buoyancy? Buoyancy is rate of change in tax. कितना टैक्स बढ़ रहा है for change in GDP. Elasticity is change in tax without any interference. है ना, that is tax elasticity. तो change in tax without any वैसा वाला इंटरफेरेंस. क्या हुआ, कहाँ गए थे? ठंड लग रही है. बाहर हीट वेव से लोग मर रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, बार बार एसी खराब हो जा रहे हैं. रनिंग इन इंस्टीट्यूशन इज सच अ ट्रबल. मतलब जब मैं टीचर था खाली लाइफ इतनी चिल थी, क्लास लेता था, घर जाता था, मस्त पढ़ाई करता था, कोई टेंशन नहीं ऑफिस पे क्या चल रहा है क्या नहीं. यहाँ 5 मिनट का चैन नहीं है. सर ये एसी भी खराब हो गया, यहाँ पे ये हो गया है, ये आज छुट्टी पे है, जीवन बर्बाद हो गया है. तो नेवर 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 नहीं, स्टार्ट अ बिजनेस नहीं है. अपनी एक्साइटमेंट अलग है, स्ट्रगल्स अलग है, उसमें भी मजा आता है. इफ यू डोंट स्टार्ट अ बिजनेस यू विल
You can have a peaceful, chill life, but when you start a business, वो स्ट्रगल आपको जीवन में बहुत सारी चीजें सिखाए. कभी किसी पे ट्रस्ट मत कर, है ना, कहीं दूर दूर तक नहीं. ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. सारी चीजें आप सीखोगे और मजा आएगा. फिर दिस लर्निंग विल मेक यू अ बेटर पर्सन. आप कल कुछ भी करना चाहोगे, you would, I have learned a lot of things in last 3 years. जब से लेवल अप स्टार्ट हुआ है, 3.5 years, lots of things. Anyways, अभी ये पढ़ते हैं. बताइए, which tax is likely to have higher elasticity? बताइए बताइए. देखो, जीडीपी के साथ कौन सा टैक्स सबसे ज्यादा बढ़ सकता है? लग्जरी कार वाला. क्यों? जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वो अपना बेसिक फूड का खर्चा थोड़ी बढ़ाएंगे. दाल रोटी चावल तो उतना ही खा रहे होंगे जितना गरीब आदमी खा रहा था. Their expenses on things like luxury car would go up, and taxes on luxury car is much higher. So the tax collection by government will also become higher. Property tax. Property tax ना, नई प्रॉपर्टी, मतलब आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस पे नहीं लग रहा है. प्रॉपर्टी टैक्स एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे लग रहा है. Got it? So A would be the answer. A would be the answer. 268. A would be the answer. Let's go to 269. Which of the following may contribute to direct tax fluency? Yes, beta. Elasticity? नहीं. Elasticity of some taxes may be directly proportional to increase in income. जैसे लग्जरी कार, इनकम जैसे बढ़ेगी, लग्जरी कार की सेल बढ़ेगी, उस पे टैक्सेस बढ़ेंगे. राइट. Come back. What are we saying? 269. Which of the following factors may contribute to direct tax fluency? 269. मतलब डायरेक्ट टैक्स कैसे बढ़ेगा, इनमें से कौन सी चीज डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रही है? बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, वाइडनिंग ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस ज्यादा लोगों का कट रहा होगा तो ज्यादा डायरेक्ट टैक्स, वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फाइलर्स इन जीएसटी रेजिम. 3 इज ऑल्सो करेक्ट. हाँ, देखो, इनडायरेक्ट टैक्स आपको बताएगा इस बिजनेस का रेवेन्यू कितना है. अगर कोई बिजनेस अपना ज्यादा रेवेन्यू डिक्लेयर कर रहा है, जैसे लेवल अप आईएएस, वी पे इनडायरेक्ट टैक्स, बाय दैट गवर्नमेंट गेट्स टू नो आवर रेवेन्यू. एट द टाइम ऑफ पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, चांसेस ऑफ हाइडिंग इनकम वुड बी लेसर. आर वी गेटिंग इट? सपोज हम बोलते हैं कि हमारा 5 CR रेवेन्यू है, 5 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, 18% उस पर जीएसटी भरा है हमने, 90 लाख जीएसटी भर दिया. दिस इज अप्रोक्सीमेट नंबर, एग्जैक्ट नंबर विल नॉट बी 90 लाख, एग्जैक्ट नंबर विल बी वैसे, बट तो गवर्नमेंट नोस कि आवर रेवेन्यू इज 5 करोड़. नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, वी से द रिसिप्ट वाज 3 करोड़, आवर एक्सपेंस वाज 2,80,000, तो आवर प्रॉफिट इज ओनली 20. Income tax department would say, we know from the GST department your receipt was 5 crore. Don't fool us. Are we getting it? तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स का वो इंक्रीज होता है, कलेक्शन इंक्रीज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज होता है, चांसेस ऑफ हाइडिंग रेवेन्यू वुड गो. आर वी गेटिंग इट? अच्छा चलो मैं एक ना रियल एग्जांपल से समझ. देखो, आप सब लोगों ने, जितने लोगों ने भी लेवल अप में एडमिशन लिया है, आप सब ने ऑनलाइन पेमेंट करके लिया होगा. वी डोंट टेक कैश एट ऑल. उससे क्या है, गवर्नमेंट इज एग्जैक्टली नोइंग, और उस तो ये इससे क्या है ना, हम जीएसटी प्रॉपरली भर पा रहे. 18% जितना भी आप पैसा दे रहे हो उसका 18% जीएसटी में चला गया. सपोज वी वर टेकिंग इट इन कैश, फॉरगेट इट, हम जीएसटी नहीं भरते.
जीएसटी नहीं भरते प्लस इनकम टैक्स भी नहीं भरते, बिकॉज सम जीएसटी डिपार्टमेंट पीपल वुड कम हियर एंड वुड से नहीं तुमने फ्रॉड किया है, तुम जीएसटी प्रॉपरली भरो। द मोमेंट हमने बोला कि इतना रेवेन्यू है, इनकम टैक्स में भी उतना पेमेंट करना पड़ जाएगा बेस्ड ऑन व्हाट विल बी सेविंग, गॉट इट? तो 3 वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द आंसर, आंसर वुड बी डी। 269 आंसर वुड बी डी। 270, 270। A? Everyone is saying A? Right? A is the answer. 270 A is the answer. 271. All three, na? C. Why? Who is saying B? Why? कौन सा स्टेटमेंट गलत लगा आपको? लीड्स टू हायर टैक्स बर्डन ऑन लो इनकम इंडिविजुअल, सही है ना? रिग्रेसिव का मतलब ही है कि जिसका इनकम कम है उस पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, जिसका इनकम ज्यादा है उस पर कम टैक्स लगा रहे हो, दैट इज रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का उल्टा ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्म्स सब आने चाहिए। हमने तो प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स पे पीवाईक्यू भी देखा एक, राइट? तो व्हाट इज द आंसर? सी विल बी द आंसर। 271 C will be the answer. Let's go to 272. 272. B, सेंटर का लाइबिलिटीज वे मोर। इवन एनकेसिंग कमेटी ने बोला 40% 20% करो, सेंटर का वॉज 50% 20% एट दैट टाइम। इवन नाउ सेंटर का लाइबिलिटी 60-70% है, स्टेट्स का 20-30% है। तो ऑल द स्टेट्स कंबाइंड टुगेदर हैव लेस लोन देन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, so one is wrong, and center's internal liability is higher than external liability. This is also true. This is true. Why? Around 95% of the loan that central government has, it is from domestic source. Only around 5-6% of center's loan is from external source. Okay, so B will be the answer. 272 के केस में B will be the answer. समझ में आई बात? Okay, 272 B will be the answer. Let's go to 273. Let's go to 273. Tell me, 273? C, sure. India's government debt has declined since 2003. अभी समझाया, debt has kept on increasing, fiscal deficit है तो 2 is correct. General government liability increased steeply in FY21. FY21 is the COVID year, 2021. So the debt, general government means center and state together. So debt increased steeply and then it went down. बहुत जल्दी नहीं आ गए बेटा, आप कहाँ थे अभी तक? घर पे? तो वही देख लेते, फिर यहाँ क्यों आए? ये 273 बी, 273 बी, 274। और आपके साथ चंटू बंटू कहाँ है? हैं? 2 लोग और रहते ना आपके साथ, तो नहीं आए। 273, 274।
इतनी जोर से बोलोगे तो सरकाज़म समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए भी मैं भी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जोर से बोलो। हाँ हाँ, तब भी सही होता, जनरल गवर्नमेंट डेट हैड गॉन अप इन FY21 फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, एंड तभी कंबाइंड भी इट हैड रिजन। ओके, 274, 274। गलत करोगे तो मुर्गा बनना है, पता है ना। लड़का लड़की में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको मुर्गा बनना पड़ेगा गलत करोगे तो। आराम से टाइम लो। हाँ, अब बताओ कौन, मनन क्या बोल रहे थे? मनन ए बोल रहा है। अनिशा क्या बोल रही है? सी। तूने बदल लिया ना, पहले भी सी बोला था। ओके, सी इज एवरीवन सेइंग ए। Government of India's debt profile is characterized by low currency risk. Government of India's debt profile is characterized by low interest rate risk. Government of C, all are correct. All 1 to 3 are correct. Let's understand. ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। All are correct. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेट प्रोफाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क मतलब लो है, मतलब हमारा फॉरेक्स पे लोन डिपेंडेंसी इज वेरी लेस। तो इवन इफ करेंसी रेट फ्लक्चुएट, हमें बाहर तो बहुत कम लो, तो आर लोन इज ओनली अराउंड 5% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन इज एक्सटर्नल, 95% इज इंटरनल। तो करेंसी रिस्क है क्या ज्यादा? नहीं। इफ 60% ऑफ आर लोन वाज एक्सटर्नल और नेक्स्ट ईयर इंडिया का रुपी डिप्रिशिएट हो गया, तो हमारा डेट बढ़ जाता। ये एक क्वेश्चन था। हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट, हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे नहीं, आज के एक्सचेंज रेट पे योर डेट वाज डिसाइडेड। Now you'll understand that question better. So question number 1, statement 1 is correct. Government of India's debt profile is characterized by low interest rate risk. Ab, what is interest rate risk? If interest rate fluctuates a lot. Now most of the loan that government of India has is long term loan at fixed interest rate. इंडिया का जो फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट रेट है, वो सॉरी लोन है गवर्नमेंट का, दैट्स वेरी मिनिमल. Most of the loan is long term and at fixed interest rate, and therefore it is characterized by low interest rate risk also. And हमारा debt is more than 100 lakh crore, it's like 140 lakh, 150 lakh crore. हाँ, गवर्नमेंट का डेट इतना है, 60-70% ऑफ द जीडीपी, 60-70% ऑफ द जीडीपी, हमारा जीडीपी 300 लाख करोड़ है ना, उसका 60%, समझ गए? इट इज मोर देन दैट. 100 lakh crore तो is a smaller quantity. That is way more than that. Got it? So all three are correct. D is the answer. 275. Another important concept. बताइए. P.
Okay, any other answer? B for boy, 1 and 2. Okay, B and C हो गए, और कोई? B. I think answer would be C. Let's look at it. देखो, growth rate, interest rate differential. Growth rate minus interest. अब negative growth rate, interest rate differential would mean what? Interest rate ज़्यादा है growth से. Will it keep the government debt sustainable? नहीं, growth ज़्यादा होनी चाहिए ना. Growth should be more. हम जनरली बुक्स में ना इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल देखते हैं. इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल शुड बी नेगेटिव. ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल शुड बी पॉजिटिव. घुमा दिया है. एंड आई हैव नॉट डन इट. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने ये टर्म यूज किया था, ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, एंड अकॉर्डिंगली आई हैड मेड दिस क्वेश्चन. कि लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से बनाया था. गॉट इट? तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, whether they are talking about interest rate growth rate differential or growth interest rate कम होना चाहिए, growth ज्यादा होना चाहिए. Got it? तो one is wrong. One is wrong. Capex led growth will enable India to keep growth interest differential positive. तो देखो, growth interest differential is positive होना अच्छी चीज है. It indicates that growth is more. If we have capex, capital expenditure led growth, means we are creating more infrastructure and all. So future में our growth would be higher. So growth rate interest rate differential will be positive, right? Who is correct? In India, growth interest rate differential has historically been generally positive. So our debt has remained sustainable. Though our debt has increased, but it has remained sustainable because our growth rate has been higher than the interest rate. Only in a few examples our growth rate had become lower than interest rate. So 2 and 3 are correct, and C would be the answer. C would be the answer. Are we understanding this? Let's go to 276. देखो यहाँ पे interest rate growth rate differential which is mentioned in most of the books. So this question is talking about that. Consider the following statements about interest rate growth rate differential. A? No, B is wrong. Interest rate growth rate differential should be negative. Growth ज़्यादा होनी चाहिए ना. 2 is wrong. 1 is correct. A. 276 A. 277. हाँ बताइए. B. B. नहीं, B. It's not a statutory body. It was planned as a statutory body, but वो statutory body बना नहीं था. पहले temporarily executive body बना था. Planned था कि 2 साल बाद it will be make statutory body, but this has never happened. So PDMC is a temporary body set up by Finance Ministry. It will help in eventual transition of PDM work for RBI to public debt management. तो in future public debt management authority बनेगा, which will be a statutory body. अभी PDM cell is not a statutory. B is the answer. B is the answer. Let's go to 278. 278. अरे रीड भी नहीं करने दिया आपने मुझे. Direct taxes. All are direct taxes, right? Income, corporate, wealth, all are direct taxes. D. 278 D. 279. Yes. A. Cess is not for routine government expenditure. Cess is for
एग्रीकल्चर सेस इज फॉर एग्रीकल्चर, है ना, ऐसे जिस जिस पर्पस, सेस इज टैक्स ओवर टैक्स विच इज फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। सरचार्ज का कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं होता, राइट। तो ए रूटीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटीज में कर रहा है, वेरस when we are talking about cess, we cannot use that money for routine government expenditure, we'll have to use it for that specific purpose. So what is the answer? A is the answer. Let's go to 280. Consider the following statements with respect to Laffer curve. Another basic concept. Laffer curve क्या होता है? Tax rate, tax collection with respect to tax rate. You will see it's something like this. This is tax collection, this is tax rate. So when rate is 0, there will be no tax collected. As rate is increased, the tax collection will keep going. As tax rate is increased, tax collection will keep going up. 1% जब tax rate होगा तो tax collection 2% पे और बढ़ेगा. But beyond a particular amount of tax, people will start stealing. क्योंकि जब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है ना, तो people don't prefer to pay those taxes. This was a hypothesis given by Laffer, and यहाँ के बाद tax will start declining, and when the tax rate is 100%, the tax collection is 0. Common sense भी है ना, suppose any income that you make, government says 100% tax लगेगा, you will not make any income, right? Tax collection would be 0. This is Laffer curve. So the tax revenue of government always increases with increasing tax rate. Wrong, it may decline. The tax revenue of government at tax rate 100% is 0. Yes, tax rate जब 100% है, tax revenue is 0. Tax rate जब 100% हो गया, वही तो समझाया. Suppose my income is 1000 rupees, government comes 100% tax. I'll have to give all 1000 rupees to government. Then why would I make any income for government? No. Okay. हाँ, tax revenue. So this is tax revenue of the government, ना? जो tax government collect करे, that is tax revenue. So if the tax rate is 100%, tax revenue will become 0. This is tax rate, 0 tax rate, 100% tax. So got it? Let's go to 281. GST वाला amendment. वाह, पढ़ने दो मुझे. हाँ बताइए क्या है? D. Why is 1 wrong? Article 271 prohibits imposition of surcharge on GST only, not on all indirect taxes. GST के अलावा भी तो बाकी indirect taxes है ना, उस पे अभी भी surcharge लग सकता है. That's why 1 is wrong. 2 is correct. The amendment has introduced Article 271A, which says that tax levied and collected by union under GST shall also be distributed between union and state. So जैसे income tax, corporate tax, custom duty, all of them get distributed between union and state. 41% पैसा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे 41% पैसा कहाँ आता है? स्टेट्स के पास आता है. वो which 41% पैसा are we talking about? That is income tax, corporate tax, custom duty and so on. All those taxes are collected, levied and collected by center. ऐसे GST जितना सेंटर का GST शेयर है ना, उसका भी 41% goes to. 2 is correct. Answer is B. 281 answer is B. 282. 282. एक सेकेंड, 282 अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर. T. 282. मनन और मनीषा तो डी बोल रहे एक साथ. तुम्हारे रीजंस हैं मनीषा, तुम्हारे भी रीजंस होंगे.
और किसी के कोई रीजन है? सबके डी। अबे सर्विस टैक्स गया पूरा, देयर इज नो सर्विस टैक्स लेफ्ट, सेंटर कैन नॉट इम्पोज सर्विस टैक्स। वो आर्टिकल ही डिलीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से जिससे सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ए, आंसर इज ए, 282 करेक्ट पूछा है ना ए। एक्साइज ड्यूटी कंप्लीटली सब्ज्यूम नहीं हुआ है, एक्साइज ड्यूटी अभी भी सम आइटम्स व्हिच आर नॉट अंडर जीएसटी उस पे तो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, अल्कोहल पे लग रहा है, राइट? तो 2 इज रॉन्ग बट 1 इज करेक्ट। क्या कर रहे हो? एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तुम ट्रिक्स कौन सिखा रहा है तुम्हें? ये तुम ट्रिक्स के वीडियोस मत देखो, है ना? ये पता है टीचर्स को छोटा दिखाने के लिए लोग ना ट्रिक्स के वीडियोस बनाते हैं, इससे तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पढ़ लो ट्रिक्स ना, अपने आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर करके अपने आप समझ में आते हैं, वरना यूपीएससी कब तुम्हारा काट देगा पता नहीं चलेगा। डोंट डिपेंड ऑन, वी शुड नो कि यार ये चीजें हैं ऐसे हैं, बट डोंट ब्लाइंडली फॉलो इट। ऑल लिख दिया गलत कर दो, तुम्हारा जीवन गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, पढ़ो, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रिक्स टेक्निक्स। और अभी तो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आजकल ना यूट्यूब पे कोई कुछ भी वीडियो बना रहा है, पढ़ाने लिखाने की हिम्मत होती नहीं किसी की, तो सब फर्जी का ज्ञान पेलने के लिए, फर्जी की मोटिवेशन, ये करोगे तो तुम्हारे 10 नंबर बढ़ जाएंगे, ये करोगे तो 20 नंबर बढ़ जाएंगे, ना? रिवाइज करो, ना पढ़ा हुआ है रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू डू वेल इन द एग्जाम, नॉट दोज रैंडम वीडियोज बाय रैंडम पीपल। अगर उनसे ही मार्क्स बढ़ जाने होते तो मैं वही बना रहा होता ना। मैंने क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रखा है RTFQ कराने में? आई वुड वॉन्ट गुड फॉर यू, राइट? अगर ये मोटिवेशनल वीडियोस के ही फायदे होते तो मैं फिर पढ़ाना छोड़ के, बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल वीडियोस ही बनाते हैं, पर क्लास में भी मोटिवेशनल वीडियो ही देते हैं, मोटिवेशन नहीं करते हैं, है ना? आई वुड हैव डन दैट। पैसा भी वहां ज्यादा मिलता है, यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी भी बहुत मिलती है, बट उससे सिलेक्शन नहीं होगा। दे विल नॉट बी एबल टू क्लेम कि हमारे इंस्टीट्यूशन से सबसे ज्यादा जेन्युइनली बच्चे सिलेक्ट हुए। दे विल नॉट बी एबल टू क्लेम, आई कैन क्लेम दैट। यूट्यूब पे पॉपुलर नहीं होऊंगा, बट बच्चे पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। ओके, तो हम उस पर फोकस करें, अच्छा क्वालिटी, अच्छा कंटेंट, काम की चीजें, बकैती नहीं। लेट्स कम टू 282। समझ में आया? दिस सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो आर्टिकल ही डिलीट कर दिया 101 एक्ट ने। नाउ देयर इज नो सर्विस टैक्स। ओके, 283। लेट्स टॉक अबाउट 283। सही है? डी, बी ना, बी फॉर बॉय। 1 तो इज रॉन्ग, ओनली पार्लियामेंट कैन इम्पोज इनकम टैक्स। एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स कैन बी इम्पोज बाय स्टेट ऑल्सो, है ना? एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स कैन बी इम्पोज बाय स्टेट ऑल्सो एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इन द स्टेट लिस्ट। तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट। नहीं, वही तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ लेते तो नहीं समझ में आता। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मॉडिफाइड एंट्री 62 व्हिच अर्लियर अलाउड स्टेट लेजिस्लेचर टू इंपोज एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स। जब से जीएसटी आया है ना, वो चला गया है। कहां से पढ़ी इकोनॉमी? ये मत बोलना मुझसे पढ़ी, बहुत मारूंगा। ये बेसिक ही है, टैक्सेशन में दिक्कत रहती है। एंट्री 62 जो पहले हुआ करता था ना, एंट्री 62 स्टेट लिस्ट का बोलता था पहले, taxes on luxuries including entertainment, amusement, betting and gambling. It has been replaced by taxes on entertainment and amusement to the extent levied and collected by panchayat, municipality, regional council and district council. तो entertainment अब सब पे GST लगेगा, but so that local bodies की taxing powers कम ना हो, उनके पास resources कम ना हो, they have been allowed, municipalities and they have been allowed to impose
एंटरटेनमेंट टैक्स। गॉट इट? ये तो पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों का ओवरलैप वाला टॉपिक है थोड़ा सा। व्हाट विल बी द आंसर? बी विल बी द आंसर। और देखो व्हाई आर वी डूइंग दीस क्वेश्चंस? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन पीवाईक्यूज। सो मच फोकस ऑन टैक्सेशन। जब तक हम पीवाईक्यू नहीं करते तब तक लगता है कि यार ये सब करना है क्या, क्यों करना है? बट बिकॉज वी हैव डन पीवाईक्यूज वी अंडरस्टैंड टैक्सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हु लेवीज व्हाट टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है। Okay, now we also understand the logic for it. We also understand the reason why something like this would be done. 283 answer would be B. Let's go to 284. Let's go to 284. बताइए बताइए बताइए। ए, आपका भी ये होगा। ठीक, बदल दिया ना तुमने। उसे फॉलो करती तो सही हो जाती। ए मार्क किया था तुमने, बदला ना, बस मैंने पूछ लिया इसलिए। ए इज द आंसर। स्टैम्प ड्यूटी, ये तो बताया ही है, ये तो मैंने कई बार रिपीट किया कि दिस इज समथिंग दैट इज लेवीड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। बट आईजीएसटी जो सेंटर लेवी कर रहा है, सेंटर ही कलेक्ट कर रहा है, बाद में स्टेट के सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है आईजीएसटी। बट हु लेवीज आईजीएसटी? सेंटर। हु कलेक्ट्स आईजीएसटी? सेंटर। लॉजिक क्या है? जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो विच स्टेट वुड कलेक्ट? वो ना कंफ्यूजन, लड़ाई, डिफरेंसेस होंगे, तो लेट सेंटर कलेक्टेड। पहले जो सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ कर, सॉरी, जो सेल्स टैक्स हुआ करता था, जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे लगता था, वो भी सेंटर कलेक्ट करता था। ऐसे ही इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे जीएसटी भी सेंटर ही कलेक्ट कर रहा है। जीएसटी सेंटर कलेक्ट कर रहा है, लेवी सेंटर कर रहा है, कलेक्ट सेंटर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट सेंटर और स्टेट में हो। दैट्स व्हाई 2 is wrong. The question was about levied by center but collected and appropriated by state. It is not collected and appropriated by state, only stamp duty is the one. Okay, 284 ka what is the answer? A is the answer. 285. We have seen math पे क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में. Let's talk about math. PYQ में था, math was introduced in 1996. तुम ज्ञान मत दो, चुप रहो. मैट regime was introduced in India for the first time in 1988. 2 साल में हटा दिया गया था for the first time. Then it was reintroduced in 1996. So 1 is wrong. What about 2? 2 is also wrong. 2019 में we have reduced it to 15%. 2019 में जो बड़ा चेंज आया था ना, कॉर्पोरेट टैक्स में जब चेंज किया गया था 30% से 25% किया गया था, at that time we also made changes in MAT. MAT was reduced from 18.5% to 15%. Both are wrong. What will be the answer? C. Incorrect पूछा हुआ है, answer would be C. बड़ा चेंज तो पता होना चाहिए ना. कब कैसे पढ़ा है इकोनॉमी तुमने, ये बताओ. अच्छे से पढ़ा है. 2019 में हमने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट चेंज किया था ना. पहले 30% था, we reduced it to 22%. Effectively it's 25%. है ना. उससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो गया था, राइट. तो व्हाट इज द आंसर? सी. बोथ आर इनकरेक्ट. 286. 286. ये आ गया बड़ा चेंज. आप पूछ रहे थे ना बड़ा चेंज, ये आ गया. बी. इनिशियली तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम हुआ था,
है ना, बिकॉज टैक्स रिड्यूस होगा. बट 1 and 2 आर करेक्ट. इट विल इंक्रीज इंडियाज अट्रैक्टिवनेस. अगर इंडिया में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम होगा तो बिजनेसेस विल कम इन इंडिया बिकॉज इनकम टैक्स वुड बी, corporate tax would be lesser, and the amendment will also contribute towards improving ease of doing business for new domestic manufacturing company. In fact, for new domestic manufacturing company, the tax rate was reduced to 15%. Tax rate, so improving ease of doing business for them. Got it? So what is the answer? B, 1 and 2. 286 answer is B. Sorry? हाँ, लॉन्ग रन में एज मोर बिजनेसेस कम टू इंडिया टैक्सेस वुड गो अप. 287 डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म पे हम टैक्सेशन वाला चैप्टर ही कर रहे हैं तो यू कैन इजीली मार्क इट. बट एनीवेज थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट टैक्स कोड को लेके अखिलेश रंजन कमेटी बना था एंड यू शुड हैव एन आइडिया रिलेटेड टू. तो 8 member गवर्नमेंट पैनल हेडेड बाय CBDT मेंबर अखिलेश रंजन submitted its report on new direct tax code. डायरेक्ट टैक्स कोड, जैसे अपन ने इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफॉर्म किया है जीएसटी लाके, ऐसे ही डायरेक्ट टैक्सेस आर आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग इन इंडिया. उसको रिफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड हैज बीन सजेस्टेड. मेनी कमिटीज ओवर द इयर्स हैव सजेस्टेड. लेटेस्ट वन इज अखिलेश रंजन कमिटी. लेटेस्ट वन इज अखिलेश रंजन. 288 consider the following statements about direct tax collection in India. 288 net direct tax collection has reached an all time high. पिछले साल क्या direct tax collection has reached an all time high? Every year it has kept on increasing. कोविड वाला ईयर में प्रॉब्लम हुआ था बट आफ्टर दैट एंड इट हैज रीच्ड ऑल टाइम हाई. डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया प्रोग्रेसिव एंड दस दे ब्रिंग इक्विटी इन द सोसाइटी. यस, सी शुड बी आंसर बोथ 1 and 2. फाइन. कॉर्पोरेट टैक्सेस ना, अब जो अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स का रिजीम है दैट इज प्रोपोर्शनल. आपका जितना भी इनकम है 25% टैक्स दे. कॉर्पोरेट टैक्स रेट अब इतना है, आपका 1 लाख इनकम है 25,000 टैक्स दे दो. आपका 100 करोड़ इनकम है 25 करोड़ टैक्स दे दो. इट इज प्रोपोर्शनल, नाइदर प्रोग्रेसिव नॉर रिग्रेसिव. Got it? But through some things like surcharges, etc., some mechanisms are there. Let's come back to 289. 289. All of the above? Okay, fine. 289D. 290. ये तो आपको, ये फैक्चुअल है, ये आपको पता होना चाहिए. आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. तो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज ITR 1 से ITR 7, क्योंकि ना अभी 1 नेशन 1 ITR लाने की बात हो रही है ना, तो उसमें जरूरी है कि यू अंडरस्टैंड प्रीवियस पहले 7 अलग अलग टाइप के ITR किस किस कैटेगरी के लिए है. तो यहाँ पे ऑल दिस कैटेगरीज आर फाइन. दिस वाज जस्ट फॉर योर रिविजन. तो आंसर वुड बी डी, बट यू शुड केयरफुली गो थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ITR. 291. स्टैट्यूटरी बॉडी सिलेबस में है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी. बी इज द आंसर. इट्स अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963. सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963. तो ये फर्स्ट गलत है, ये एग्जीक्यूटिव नहीं स्टैट्यूटरी है. इट्स अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. कॉमन सेंस है. बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा होगा ना. इट्स पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. 2 इज करेक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 6 members, नॉट 2 members, 6 members. तो आप में से जो लोग IRS ऑफिसर बनेंगे, IRS IT वाले जो लोग बनोगे ना, इनकम टैक्स वाले IRS ऑफिसर, आपका जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा आपके सर्विस में,
that person will be chairperson of CBDT. जैसे IAS ऑफिसर जो सीनियर मोस्ट होता है, जो IAS ऑफिसर की जो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी. In the same way, for IRS IT officer, it is the chairperson of Central Board of Direct Tax. And this Central Board of Direct Taxes has chairperson plus 6 other members, not 2 members. So C is also wrong. B is correct. 291 B is correct. Okay. अब 2-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे. ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक हमने डायरेक्ट टैक्सेस पे देखा था. लेट्स क्विकली लुक एट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड देन विल गो टू एक्सटर्नल सेक्टर. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? 292. Which of the following hasn't been subsumed under GST? Okay, let online students answer this. Guys, online students, 292. You people are becoming lazy. 290 किसी ने आंसर नहीं किया, 91 किसी ने आंसर नहीं किया, 292. I need 10 answers from online students. No one is answering online. लाइव स्ट्रीमिंग बंद करा दे. आंसर ही नहीं कर रहा कोई. Someone said A. बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो जीएसटी ने सब्ज्यूम नहीं किया है, बट देयर वर एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, ऑल दोज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय आईजीएसटी. ओके, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड सम ऑफ द कस्टम ड्यूटीज बट नॉट द बेसिक कस्टम ड्यूटी. अभी भी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है अदर देन आईजी. व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर. ओके, जीएसटी हैज सब्ज्यूम्ड, नॉट सब्ज्यूम्ड ए. बेसिक कस्टम ड्यूटी स्टिल देयर. 293. Consider the following statements about goods and services tax regime in India. C. 1 and 2 are wrong. GST is applicable on supply of goods and services, but not all goods and services. Alcohol पे applicable नहीं है, petroleum products पे applicable नहीं है. Okay, तो 1 is wrong. GST is origin नहीं, destination based है. 2 is wrong and 3 is correct. Exports are zero rated under present GST regime. That is true. तो एक्सपोर्ट पे आप देखोगे आईजीएसटी नहीं लग रहा है, सारी चीजें, इट इज जीरो रेट. तो 3 C 3 ओनली. ओके, लेट्स गो टू 294. 294. Come on. A. GST compensation has contributed towards fulfilling the requirement of GST. Fine. 1 is correct. Why is 2 wrong? Not. एक तो 1% नहीं. Compensation cess is higher and it is on 5 sin goods. 5 products which are considered sin goods. जिसमें SUV vehicles which are more than 4 meters in length. Here 50% of tax is charged as this thing. Then aerated drinks, pan masala, tobacco products, these are also other sin goods जहाँ पे cess लगता है, not on all goods. 2 is wrong. 1 is correct. A would be the answer. 295. 295.
नॉट करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? झट से बदल जाते हो। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ आर सेइंग ए, बी, 1 बी, सी, डी, B is the answer. B is wrong. GSTN is now owned 100% by government. Initially private players का रोल था, but अब 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है, 50% by center and 50% by state and UT. Okay, GST network is completely owned by government. 3 तो रॉन्ग हो गया इससे, नॉट करेक्ट पूछा था आपसे, बाकी 1, 2 and 4 आर करेक्ट. GST network is a not-for-profit company created under Section 8 of Companies Act. It provides IT backbone, ये भी सही है obviously. तो देखो, it provides IT backbone of GST system, उससे भी आप, अच्छा वो तो सही है, ठीक है. 2 is correct, 3 is wrong, 4 is also correct. After January 2020, आप ना, you cannot get GST registration without mandatory physical verification और आधार authentication. इनमें से कुछ होना पड़ेगा. Earlier you could have done that. Okay, so what is the answer? B is the answer. 3 is wrong. Wrong पूछा है, 3 is wrong. बाकी 1, 2 and 4 are correct. 296. Last question for our this topic. नहीं, अगला topic आएगा इसके. For this topic, last question. सही, 296. A? Yes. Capital expenditure in recent years has kept on increasing, but capital expenditure is still a very small part. Most of the expenditure of government is revenue expenditure. So this was fiscal policy, government budgeting, taxation. We have covered PYQs, we have covered a few more questions. है ना? मैं एक बार जितने commitments हैं सब fulfill हो जाएं, उसके बाद I'll make a few questions on some current issues also. हमने देखा है when we look at this topic, current issues से as such बहुत questions नहीं है. All the questions are from the fundamental areas. But still बनाएंगे जब वो हो जाएगा. अभी के लिए this is it. Okay. Now let's come to external sector. क्या क्या बोल रहे हो शाश्वत? क्या चाहिए? डिस्टर्ब मत करो, आ जाओ. 297. वी आर स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल सेक्टर. तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज रेट एंड अदर सच एसोसिएटेड इश्यूज. विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन देम. फर्स्ट देयर आर PYQs. लेट अस स्टार्ट विद PYQs एंड देन विल गो अहेड. नीर और रीर हमने अच्छे से पढ़ा है क्लास में? भूल गए? आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है भूल गए. पढ़ा है मैंने तो अपना काम किया है. मनीषा ने पढ़ा है, याद भी है. नाइस. हाउ डू वी कैलकुलेट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? उससे ही तो सारे आंसर होंगे. इफ यू रिमेंबर दैट, नो मैटर व्हाट यूपीएससी आस्क, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट. क्या नालायक बच्चों. नीर वाज व्हाट? नीर वाज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ E by EI raised to WI. यही था? नहीं? अरे यार क्या बात कर. E क्या है? रुपी का एक्सचेंज रेट विद SDR. इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट. मान लो देयर आर 40 कंट्रीज विच वी आर कंसिडरिंग फॉर कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेट. तो 40 कंट्रीज में पहले कंट्री का एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू SDR. दिस रेज टू द वेट
इस कंट्री के साथ अपना कितना ट्रेड हो रहा है, कितना परसेंट ट्रेड हो रहा है, इंटू ई बाय E2 रेट 2 इंटू ई बाई E3 रेट 3 ई बाय EN रेट n। अराउंड 40 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ये कैलकुलेट करते हैं। ये नीर था, है ना। रीड में यू ऑल्सो ऐड प्राइस इंडेक्स, यू ऑल्सो ऐड प्राइस इंडेक्स, जस्ट ये बदलता है। अभी रीड पे नहीं आते, सिर्फ नीर की बात करते हैं। व्हाट डज ई रिप्रेजेंट? ई रिप्रेजेंट 1 रुपये में आप कितना SDR खरीद सकते हो। E1 रिप्रेजेंट वो कंट्री जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो, उसके 1 यूनिट में कितना SDR खरीद सकते हो। राइट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नीर। एक मनीषा को याद है, अभी ना तुम क्लास में हो मेरे, याद है ये? थोड़ा बहुत रिवाइज क्यों नहीं किया ये बताओ, रह गया? नाक कटाते रहते हो मेरी, ऐसे घिस घिस के छोटी हो गई है। तुम लोगों की वजह से मेरी नाक छोटी होती जा रही है। पहले मेरी तोते जैसी लंबी नाक थी, तो तुम्हारे जैसे लोग मेरी नाक कटाते रहे हैं। आ जाओ। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। वापस आइए, ऊपर क्या है, 1 रुपए में कितना SDR आ रहा है। अब नीर अगर बढ़ रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट? रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, 1 रुपए में ज्यादा SDR आ रहा है व्हेन कंपेयर टू दूसरे करेंसीज में कितना SDR आ रहा है, राइट? क्लियर? तो नीर गोइंग अप will tell you about appreciation. Near going down will say that rupee is depreciating. अच्छा, what is the purpose of near? देखो, when we are measuring exchange rate, if we measure it only with respect to US, it does not serve our purpose because our trade is not only happening with US, it's happening with a number of other countries also. So we have chosen 40 countries with which most of our trade takes place, and near is a comparison of exchange rate with all of them. तभी यहाँ पे n number of countries के साथ, and तब बोलेंगे हम कि इंडिया का effective exchange rate increase हुआ है या decrease हुआ है। I cannot go बहुत डिटेल में अभी, बट I remember while teaching it in class I spent 45 minutes on explaining this concept only, नीर और रीड का concept समझा। But what is नीर अभी समझ में आया? नीर is appreciating means in 1 rupee you are buying more SDR. नीर इज एप्रिशिएटिंग। तो न्यूमरेटर में 1 रुपये में कितने SDR है, डिनोमिनेटर में दूसरे करेंसी में 1 यूनिट में कितने SDR है। दिस इज व्हाट वी हैव। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, करेक्ट। एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखो, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हम क्या ऐड कर देते हैं, प्राइस इंडेक्स। लेट्स से इंडिया का CPI, दूसरी कंट्री का CPI। When you will do this, you will get रीर। अब रीर बढ़ रहा है, तो रीर बढ़ रहा है, एक तो इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिया का रुपी अप्रिशिएट भी हुआ है। विल इट इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस और रिड्यूस कॉम्पिटिटिवनेस? एक तो इंडिया में चीज महंगी हो रही है, ऊपर से इंडिया का रुपी भी अप्रिशिएट हुआ है। रीर इज रफली इंडिकेटिंग दैट, so it will do what? It will reduce competitiveness, and thus an increase in real effective exchange rate indicates an improvement in trade and competitiveness is wrong. A decrease in rear, इंडिया में चीज सस्ती हो गई, उसे बाहर बेचना आसान हो जाएगा, एंड इंडिया का रुपी डिप्रिशिएट हो गया, it will indicate what? More competitiveness, not increase of rear. Got it? Third, an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear. हम बोल रहे हैं अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, दैट इज P/P1 में ऊपर वाला टर्म ज्यादा है, तो नीर और रीर में डिफरेंस बढ़ जाएगा। इज इट ट्रू? यस, दैट इज, तो 1 and 3 आर करेक्ट, सी इज द आंसर। गॉट इट?
रिवाइज करो, रिविजन ही तो करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ RTFQ? इससे पहले आप वो एरियाज पढ़ के आ जाओ। खाली क्लास में आओगे ना, बिना पढ़े आओगे तो यू विल बी लाइक, यू विल बी वेस्टिंग योर 3 hours. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव रिवाइज्ड योर इकोनॉमी। कल जो सेक्शन है एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ के आओ। And then when you will solve those questions, you will be like easy. Else you will waste a lot of time in class. We do not have to do that. Okay. So C is the answer. Let's go to 298. Tell me. Sure. D. Manisha is saying D. What is Manan saying? Some people have said A, some D. और कोई आंसर है किसी का? अच्छा ये बताओ, थर्ड स्टेटमेंट, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस करेंसी रिस्क और इंक्रीजेस करेंसी रिस्क। आपने अगर बाहर से पैसे बोरो कर रखे हैं एंड रुपी devalues, will you not have to pay more money? External commercial borrowing, suppose you have borrowed $1. $1 is worth 80 rupees. Now if rupee depreciate, $1 becomes 90 rupees. So you'll have to pay 90 rupees. Right? So it increases currency risk. 3 is wrong. 1 and 2 are correct. A is the answer. क्या यार, ध्यान से पढ़ते नहीं हो। A is the answer, right? 299. Take your time. $299. Tell me. A, B, C, D भी बोल दो, कोई ABC तो बोल ही दिया। B में increases the foreign value of domestic, अबे depreciate हुआ है, devalue हुआ है, how will it increase the foreign value of domestic currency? The effect of devaluation of currency is that it increases the foreign value of no, it decreases the foreign value, no? आपकी वैल्यू गिर जाती है, devalue का मतलब ही है devalue. Who is wrong? Improves the trade balance? No. अब सोचो इंडिया के केस में देखो, इंडिया इंपोर्ट करती है ज्यादा, उस पर ज्यादा पैसे लगते हैं, तो ट्रेड बैलेंस फर्दर वर्सन्स, नॉट नेसेसरली दैट इट इंप्रूव्स। तो वन ओनली 299 A, 299 A. लेट्स गो टू 300. लेट्स गो टू 300. बताइए। देखो 4 से शुरू करते हैं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, दिस इज बैंकिंग कैपिटल, दिस इज इन नो वे FDI. So 4 should not be there. We are left with A and B only. 2 देखो, foreign institutional investment with certain condition. If FII is more than 10%, it becomes FDI. So 2 should be correct. So we are left with only A. We are left with only A. But
अब समझो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली एफडीआई, दे आर नॉट एग्जैक्टली एफडीआई। तो इफ देयर वाज एन ऑप्शन जहां पे हमें ना ये मिलता कि ओनली टू, वी वुड हैव प्रेफर्ड दैट, वी वुड हैव प्रेफर्ड दैट। इन सम केसेस फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में बिकम एफडीआई। देखो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? आपने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा है, बट दिस लोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। If this equity is more than 10%, then it becomes FDI। बहुत वैसा है। या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अपन ने पढ़ा है, कैपिटल मार्केट में पढ़ा था। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जैसे इंडिया का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में इन्फोसिस के शेयर्स वहां पे ट्रेड हो रहे हैं, तो जो बैंकर वहां पे वो जो डिपॉजिटरी उस शेयर्स को वहां पे ट्रेड करवा रहा है, दे मे हैव बॉट मोर देन 10% ऑफ द शेयर, at that time it may become FDI। okay, so if given an option we would have gone for 2 only, but वो option है नहीं, तो we are pretty sure कि 4 is not there, 2 should be there, उससे we are marking it to be 1, 2 and 3, 300 का A। do we all get it? okay, 301। अच्छा, 25th को इट मे हैपन कि बिकॉज ऑफ इलेक्शंस ऑफिस बंद हो सकता है ना, बट विल ट्राई टू इंश्योर दैट हमारा RTFQ लाइव चलता रहे, तो आप लोग उस दिन सब लाइव देख पाएंगे। विल ट्राई टू इंश्योर दैट। ओके, इलेक्शन के लिए सबको इलेक्शन में वोट देने जाना जरूरी है, तो ऑफिस तो मोस्ट प्रोबेबली ऑफ रहेगा। आई विल कंफर्म इट टुमारो, बट RTFQ विल कंटिन्यू ऑनलाइन, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद तो किसी को ज्यादा वोट देने के लिए जाना नहीं है, तो हम लाइव सेशन लेके उस टाइम करें। 301 with reference to FDI in India, which one of the following is considered its major characteristic? को तो पढ़ने दो मुझे, मैं कैसे कंफर्म करूंगा? It is investment। B ना? Why are you saying C? तो इसलिए लड़ने लग रहे हो, मैंने पढ़ा नहीं उससे पहले तुम आंसर देने लग गए हो और गलत दे रहे हो। तुम्हें ही मुर्गा बनाना है। हाँ, मैं बना देता हूँ क्लास में मुर्गा, जो जल्दी जल्दी करते हैं ना, क्योंकि उनको बनना जरूरी है। तुम्हें सही आता भी है, पर फिर भी स्टाइल मारने के चक्कर में सबसे पहले आंसर करूंगा। ऐसे सोचो, यूपीएससी का पेपर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, एक बंदा 1.5 घंटे में करके उठ गया, उसे क्या बोलोगे? गधा ही बोलोगे ना? भाई आराम से कर लेता, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, है ना? या तो उसे कुछ आता नहीं है, या फिर गधा है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट सही करना है। व्हाट इज नॉट, जल्दी करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सही करना है। ओके, व्हाट इज द आंसर? B is the answer। 301, B is the answer। 302 with reference to international trade of India at present, which of the following statements is are correct? ट्रेड बैलेंस में करता हूं, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। थ्री 302 ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप आंसर करिए प्लीज। 302। अच्छा ना, ये ना, दिस इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। अब ये जो ना, इट्स इंपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। अब 2024 का रीसेंट ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम 2020 का रीसेंट ईयर, है ना? तो यू मे नॉट नो what is the सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। हम अभी के हिसाब से आंसर कर सकते हैं, उस टाइम के हिसाब से आंसर करोगे तो कौन सा क्वेश्चन है? 2020 विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, विद रेफरेंस टू हाँ, इसका आंसर वैसे तो 1 and 3 था, और 1 and 3 ऑप्शन में था नहीं, तो यूपीएससी ड्रॉप दिस क्वेश्चन। 302 को यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, सॉल्यूशंस में से उसे ड्रॉप कर दिया। वाई 4 नहीं, मैंने 1 and 3 बोला।
India suffers from an overall trade current account. हाँ, yes, India suffers. Which of the following statement is with reference to? हाँ, sorry, 1 and 4 होना चाहिए. I'm sorry, 1 and 4, not 1 and 3. India's exports of service. एक मिनट रुक जाओ. India's exports of service are more than its imports of service. ये भी correct है, 3 भी correct है. Just give me a second. India's merchandise export are less than merchandise import. ये भी correct है. India's imports of iron, steel, chemical, machinery have decreased in recent. This is not 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 should have been answered, but UPSC had dropped it. UPSC had dropped it. हाँ, कुछ भी हुआ होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ भी होगा. Ignore this question. Okay. 303. 303. D, easy. 303D. Okay. 304. 304. Let everyone attempt. A, B. Everyone is saying B only. 304. Himanshu. Let him attempt. What is the answer, Himanshu? B. Sure. Yes. Everyone is correct. B is the answer. 304 B. 305. होता ही 305. एक मिनट. 305 का आप लोग बोल रहे हैं ए. परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम. हाँ, नहीं, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट. सिंस 2011 इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट. तो ए टू 305. ए 306. बताइए. इंपोर्ट कवर नहीं पता आप लोगों को? डी. इंपोर्ट कवर क्या होता है? आपके पास जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपके कितने टाइम का इंपोर्ट इंश्योर कर सकता है. इंपोर्ट कवर ये है. जैसे ड्यूरिंग द 1991 क्राइसिस हमारा इंपोर्ट कवर लेस देन 10 डेज का रह गया था. वी वर लेफ्ट विथ ओनली दैट मच फॉरेन एक्सचेंज की 10 दिन का इंपोर्ट यूज. 10 days later we would not have been able to pay for our import. Import cover is that. Which of the following best describe the term import cover? It is the number of months of import that could be paid by a country's international reserve. D is the answer. 306. Again, अपन ने तो पढ़ा है ना जब ये फॉरेक्स और ये सारी चीजें पढ़ रहे थे. Why confusion? उनको confusion, आपको नहीं था. वो बोल रही है मेरे को नहीं इसको. 307. Convertibility of rupee implies freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa. In fact,
कन्वर्टेबिलिटी पे ना 1995 से अब तक 4 बार क्वेश्चन, सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अभी आप PYQ सारे करते जाओगे, आपको दिखता जाएगा। ओके, लेट्स गो टू 308। कन्वर्ट 307 आंसर इज सी। लेट्स गो टू 308। करंट अकाउंट, 1 and 3, राइट। फॉरेन एसेट्स कैपिटल है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स लोन्स और उस फॉर्म में होता है, तो यस कैपिटल है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, सी। 308 सी, फाइन। 309, which of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserve? 309, क्या बोल रहे हो? बी, श्योर? यस, 309 का बी इज द आंसर। 310, कैपिटल अकाउंट। देखो कितने बेसिक बेसिक, करंट अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। 310, फॉरेन लोन PI portfolio 1 to 4, B, B should be the answer। 310 B should be the answer। 310, 311 गायब हो गया, कोई बात नहीं। 312, ए ए सी। गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन से क्या, इकोनॉमी का पूरा ट्रांजैक्शन देखते हैं ना। ये क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये थोड़ी होगा। ए, all import and export transaction, it's not only talking about import and export of goods and services, all import and export transaction, so all the transactions which are happening between India and rest of the world will constitute your balance of trade। 30, what is the question number? A, 312 answer is A। 312 answer is A। 313, which of the following will include FDI in India? टेक योर टाइम, आराम से सही करना है। 313, ये क्यों, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो FPI है ना। C, 1, 2 and 3, all three of them can be FDI। 313 D, 313 D। Let's go to 314, 314। थर्ड पॉइंट किसका, 313 का। कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी ने यहाँ पे आके कंपनी सेटअप कर दी 100% खुद से के पैसे लगा के, व्हाट विल बी दैट? 314, कैपिटल गेन। अच्छा, दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन नॉट हियर, यहाँ नहीं होना चाहिए था, कैपिटल गेन वाला इनकम टैक्स वगैरह वाले नॉट हियर। एनीवेज, टेक योर टाइम, ऐसे लड़ना नहीं है। बी डी मैच भी है ना।
तुम लोगों को देखना नहीं है, एग्जाम आ रहा है, कोई भी जीते क्या फर्क पड़ेगा। आरसीबी के कितने फैन है? और राजस्थान रॉयल्स वाले? कोई नहीं। हम द राजस्थान रॉयल्स। हंस रहे हो ना? सबका बदला लेंगे, चिंता मत करो, धोनी भाई का बदला भी लेंगे। देखते नहीं हो? चलो। हाँ, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइज। कैपिटल गेन क्या होता है ना, जैसे आपने कोई लैंड खरीदा, उसका प्राइस बढ़ गया, तो यू बॉट इट इन 1 लाख रुपीज, यू सेल इट इन 2 लाख रुपीज, तो 1 लाख का कैपिटल गेन, राइट। इट्स नॉट इनकम एज सच बट इट्स कैपिटल गेन। ऐसे आपने स्टॉक्स खरीदे, उसका प्राइस बढ़ गया, ओके, तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट्स नॉट कैपिटल गेन। किसी प्रोडक्ट का सेल बढ़ गया, नॉट सेइंग कि उस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल वैल्यू बढ़ गया होगा। व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड, दैट्स कैपिटल गेन। When you purchase a painting and there is a growth in its value due to increase in its popularity, this is also capital gain. So 2 and 3 would be capital, B would be the answer. 3, 1, 4, so B would be the answer. Okay. 3, 1, 5. देखो 2011 का कंडीशन सोचो, 2011 में ना एफडीआई वाज नॉट दैट ओपन, इट वाज ओनली अलाउड इन सर्टेन सेक्टर्स। अभी तो एफडीआई ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूप से 100% अलाउड है, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर, नॉट जैसे डिफेंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट 2011 में एफडीआई वाज अलाउड ओनली इन फ्यू सेक्टर्स एंड देयर वर लॉट्स ऑफ रेगुलेशंस। तो एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, बिकॉज एफआईआई आपको स्टॉक मार्केट में जा जो भी लिस्टेड है आप उसको खरीद सकते हो स्टॉक्स को। एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक, तो बी वुड बिकम आंसर, 315 का बी वुड बिकम। सी क्यों नहीं? एफडीआई फ्लोज ओनली टू द सेकेंडरी मार्केट। बेटा एफडीआई तो सेकेंडरी मार्केट में नहीं जाता ना, सेकेंडरी मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट, वहां तो एफपीआई आता है ना, इसीलिए ना पढ़ा रखा है प्राइमरी सेकेंडरी। अभी कैपिटल मार्केट वाले क्लास में पढ़ाया था ना, एफडीआई फ्लोज प्राइमरी मार्केट वाले एफआईआई टारगेट्स द सेकेंडरी मार्केट। हाँ तब ओके हो सकता था, है ना। और एक्चुअली ना वहां भी प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो थोड़ा गलत, बिकॉज प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब एक कंपनी अपना आईपीओ कर रही है पहली बार, तो एफडीआई तो उसमें भी नहीं है ना, तो वो भी गलत होता। एफआईआई इज कंसिडर्ड मोर स्टेबल, नो एफआईआई इज। ठीक है ठीक है, बी, तो बी इज द आंसर। 315 बी इज द आंसर। 316, consider the following action with government can take. Which of the above action can help in reducing current account deficit? Can help in reducing current account deficit. सोचो सोचो सोचो। डी, ओके, डी। देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच गवर्नमेंट कैन टेक। तो डी वैल्यूइंग आपका एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है ना। और ये नहीं बोला कि ये वो कंट्री है जहां पे इंपोर्ट ज्यादा होता है, ये तो नहीं बोला है ना कहीं भी। तो वन कैन बी देयर, reduction of export duty will be problematic everywhere, it will reduce export. Adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FII, this will also help in fighting the depreciation. And this will नहीं, ये तो current account deficit नहीं करेगा ना। एक मिनट रुको। Adopting suitable policies which attract greater FDI and FII,
एफडीआई और एफआईआई तो विल कम टू इंडिया इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में, बट इसका फिर वही वाला आर्ग्यूमेंट है, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है तो मोर एक्सपोर्ट्स कुड बी क्रिएटेड एंड इट कैन कंट्रीब्यूट, कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट. ओके, डी 1 and 3. हाँ, अच्छा विच कैन हेल्प इन, देखो रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट वैसे भी समझ लो ना, करंट अकाउंट सरप्लस होता उसे और सरप्लस कर देना, वो भी तो डेफिसिट रिड्यूस होना है ना. हाँ, राइट, तो डी इज द आंसर. 316 डी इज द आंसर. लेट्स कम टू 317. अपन ने पढ़ा है ये एडीआर जीडीआर एसडीआर सब पढ़ा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तीनों पढ़े हुए हैं अपन ने. ओके, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी. एसडीआर है ना, एसडीआर एस करेंसी नहीं है, बट एसडीआर कैन बी ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी. फाइन. 317 का सी. इज एवरीवन कंफर्टेबल? ओके. 318. 318. सिद्धार्थ बोल रहा है बस इतना ही. अरे पढ़ो, क्या करोगे घर जाके. 318. देखो पता है क्या है, 100 क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने होते हैं ना, आप घर में भी 3 घंटे से ज्यादा लगाते. एग्जाम में यू डू इट इन 2 hours, बट घर में व्हेन यू आर डूइंग इट यू विल टेक मोर टाइम टू डू इट, एंड देन here you have someone who can explain it to you. So if in 3 hours we are doing 100 questions, that's a good ROI. That's a good return on investment, and you're also understanding different viewpoints. You're also participating in discussion. तो करते रहो जब तक दिमाग ले रहा है चीजों को, करो. 318. 318. Great deal. आराम से टाइम लेके सही बताना है, गलत नहीं. बताइए बताइए. बी. देखो राइट आंसर तो बी भी नहीं है, राइट आंसर तो ये था. नहीं नहीं, हाँ राइट आंसर है कि वहां पे यार टैक्स रेट्स बहुत कम है तो लोग वहां पे शेल कंपनीज बना लेते हैं और फिर उन शेल कंपनीज से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना. दैट इज द प्राइमरी रीजन, बट अमंग दीज ऑप्शन बी इज द आंसर. राइट, 318 का बी इज द आंसर. 319. 31. 319. बताओ बताओ बताओ. एफडीआई, वहां पे एफआईआई की वजह से प्रॉब्लम हुआ था. एफआईआई वाज हॉट मनी, ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका. द मोमेंट दे स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम, ऑल द एफआईआई वाज withdrawn. It made everyone realize that FII is not something very stable investment. FDI is better, है ना. FDI is better. लोन लेके कुछ करना इस, नहीं बिल्कुल नहीं. देखो समझो, आप लोन लोगे तो आपको पैसे वापस करने हैं, वेरस एफडीआई आया तो पैसा कंट्री में ही आ गया, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, सारी चीजें होंगी. ओके, तो बी. 319 बी. 320. देखो फिर से आ गया कन्वर्टेबिलिटी. फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी में मीन, हाँ बताइए. बी.
कन्वर्टिबिलिटी मीन्स फुल कन्वर्टिबिलिटी, आप उस अपने करेंसी को किसी भी फॉरेन करेंसी में फुली कन्वर्ट कर सकते हो. तो डी ऑल 1, 2 and 3, राइट. इट्स फ्री फ्लोट विद इंटरनेशनल करेंसीज, यस. इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी other international currency at any prescribed place inside outside the country, ठीक है. It acts just like any other international currency because it can be easily switched into the international currency. Okay, so D is the answer. 320, D is the answer. 321. फिर से देखो 2000 में, 2002 पिछला क्वेश्चन 2002 का था, फिर 2000 में पूछ लिया. Consider the following statements. बी करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है ना इंडिया में. नहीं, गोल्ड में नहीं. देखो गोल्ड, इसका मतलब आप देखो गोल्ड कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर. तो इफ रुपी कैन बी अनलिमिटेड अमाउंट में गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है, इसका मतलब रुपी अनलिमिटेड अमाउंट में डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है इवन फॉर कैपिटल. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज नॉट देयर, ओनली करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज देयर. तो A is the answer. A is the answer. Got it? Okay. 322. 1999. ये क्यों A होगा ना? हिमांशु ने सी क्यों सोचा? डिवैल्यूएशन में प्रमोट एक्सपोर्ट, क्योंकि डिवैल्यूएशन के आपके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. देखो समझो, व्हेन $1 becomes 80 rupees. Suppose $1 was 50 rupees. तो and now $1 has become 100 rupees. अब आप अपने देश में टी शर्ट कितने बना रहे हो? 50 रुपए में, है ना. पर अब 50 रुपए इज इक्वल टू $0.5. तो बाहर कितने में बिक रहा होगा वो? यू कैन सेल इट इन 50 रुपीज, तो $0.5 में. तो बेसिक फंडामेंटल है ना, डिप्रिशिएशन से योर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजेस. ओके, ए 322 का ए इज द आंसर. 323. फिर से देखो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी. देखा 4 बार आ गया इन लास्ट 20 years, 25 years, 4 times this convertibility question has been asked. The capital account convertibility of Indian rupee implies. अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता तो उसका क्या मतलब होता? That Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trading financial assets. मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह कैपिटल अकाउंट के लिए भी हो पाता. सी वुड हैव बीन द आंसर. ओके, तो 323 का सी. सी that the Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trade in goods and services. तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है ना. तो क्वेश्चन इज अबाउट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. हाँ, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100%. Then the Indian rupee can be exchanged for, हाँ, तो C is the answer, right? Is everyone clear about it? Okay, 323. अब there are questions which I have made, but late हो गया है थोड़ा. तो असाइनमेंट 324 से आगे तक के जो क्वेश्चंस हैं, आप जितना भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अटेम्प्ट करके इसी वीडियो के कमेंट में डालिएगा एंड आई विल वेरीफाई इट देयर. फाइन, क्योंकि कल मेरा RTFQ खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद आई विल गो थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई ऑन ऑल ऑफ देम, ensuring that आप सारे आंसर्स कर पाओगे. ओके, आई विल सी यू टुमारो. टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दोस टॉपिक. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच. ऑनलाइन वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना, आखिरी में क्या क्या करना होता है सब कर देना. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट, अब कमेंट तो आंसर करोगे ना, पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. आंसर नहीं बता रहा, आप लोग आंसर बताइए. आप लोग कमेंट्स में आंसर बताइएगा, मैं उसे वेरीफाई करूंगा.